Hello, good evening, and welcome to this Economy Foundation module. Something wrong with the camera, just give me a minute. All right, should be okay now. All right. So, hello and welcome. A very good evening. Now, the light is very less for some reason. So, I hope you all watched that lecture on inclusive growth. I hope you done that, right? There is something wrong with the camera. I'll just fix it. Give me a minute. Yeah, now it should be okay. I'll just check. Yeah, looks okay now. All right. So I hope you've all watched the lecture on inclusive growth, and I hope वो lecture देख के आपको ये समझ भी आया हो how you have to read for means. How you must have realized that when we read for the means examination, it is a very different ball game, right? आपने अगर SDG याद किए थे तो आपको उस lecture के end में जो conclusion हमने लिखा था inclusive growth का ही conclusion हमने as inclusive लिखा था. So I am sure you would have realized the importance of writing SDGs in your answers and how they can be used in writing better answers, right? We also must have understood that means की जब पढ़ाई होती है, the objective there is very different. अभी हम यहाँ पर we are trying to do both prelims and means together, but in the means examination the objective is very different. It is to put the answers in such a way that they are multidimensional, they are addressing the demand of the question, they are addressing all parts of the question, and they also show your ability of being well read, your communication ability, etc etc. Now, जो पीछे का लॉजिक था हम पढ़ चुके थे, and in that video it was mainly about how to write the answers. The one major thing that I wanted you to absorb from that video was the भारतीय model of inclusive development. अब ये जो भारतीय मॉडल था, this you will usually not see in any other economics textbook. बाकी जो चीजें हैं जो उसमें मैंने आपको पढ़ाई थी वो तो आप you will see in other textbooks also. बट ये जो भारतीय मॉडल ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट था, इसके 3 पिलर थे. पहले आप मुझे चैट में लिख के बताओ व्हाट वर दोस 3 पिलर्स, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने अच्छे से वो लेक्चर पढ़ा है और रिवाइज किया है. ये इसके जो 3 पिलर्स हैं, दिस यू विल नॉट फाइंड इन अदर टेक्स्ट बुक्स, एंड व्हेन यू राइट थिंग्स लाइक दिस इन योर आंसर्स, right, then it shows your ability to actually score higher than other people, and this is what is the difference creator. Things like this are the difference creator. बाकी जो भी उस लेक्चर में पढ़ाया गया, any serious means going aspirant would know about every other thing that was taught there except this. This is what creates the difference. Okay, one is index market economics, very good. What was else? What were the other things? One was index market economics as per Indian tradition and Indian approach, adopting the middle path. What else? Very good. One was Antyodaya and empowerment. Again, as you can see, inspired from Indian philosophical tradition, the Antyodaya tradition given by Gandhi ji and Deen Dayal Upadhyay ji. What was the last thing? Holistic approach. Very good. So when you write things like this, then we come to actually creating a differentiator in the means. अगर आप means में वैसे भी inclusive growth किसी भी institute का अगर आप खोल के देखोगे, these things you will not find. But this is official government policy. This is coming from the Niti Aayog itself. तो जब हम इस तरह की चीजें लिखते हैं, then we are able to create a differentiator in the means. Okay. Now, the next few topics that we are going to read now in this course, over the next 8 lectures, they are going to be the most important topics for prelims.
हमने मीन्स का काफी कुछ देखा, आपने देखा है हमने मीन्स के बहुत सारे क्वेश्चंस भी कवर किए. The next few topics that we are going to read, right? The next few topics that we are going to read, those topics are going to have a lot of relevance for prelims, right? अभी तक हमने means के बहुत क्वेश्चन कवर किए. It's not that these topics do not have a relevance for means. ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ने वाले हैं उनका means में relevance नहीं है, but they are primarily prelims based topics, the ones that we are going to read from now on, at least till the next 8 lectures. Now, what are these topics that we are going to read? आगे के मैं आपको बस एक I'm just giving you a brief of all the topics that we are going to see now in the next 8 lectures. These topics are going to firstly start with inflation. Inflation, of course, is asked sometimes in the means. It was asked in this year's means, but overall the number of times inflation has been asked काफी कम है वो, right? Now from inflation, you have to see what is the macroeconomic objective here, low and stable rate of inflation. ये हम देख चुके हैं. This is the macroeconomic objective of the government. From this, we also have to understand countering inflation. If it does not stay low and stable, we will have to counter inflation. Now, for countering inflation, there are going to be various things that the government can do. What are the two policies that the government has in this regard? What are the two things the government can do? Government can either choose to focus on monetary policy, or the government can choose to focus on fiscal policy. Right? So these are the two things we are going to read. Then, when we look at monetary policy is, although we have not read, we are going to read monetary policy now. Monetary policy is largely concerned with interest rates. We have seen the impact of interest rates on aggregate demand when we were looking at aggregate demand. So when we look at interest rates now, this gets related to another chapter of banking. How do banks operate and how does money operate? So what is money, how does money operate, and how do banks operate? So money, banking and monetary policy along with inflation we are going to read. Now along with this we are also going to read fiscal policy. Fiscal policy mainly was about taxation. Now here in this matrix there is one thing that is missing, that is capital markets, or as you call it, share market. Because we are going to read about banking, what are households doing here? They are doing savings. Households are also directly putting their money into the share market, which we all know, the Sensex, Bombay Stock Exchange, the National Stock Exchange, the Nifty, etc. Ye capital market and stock market we are also going to read. So now in the next 8 lectures, we have to understand all of these topics together. And they are fairly linked. आपस में इनका काफी linkage है. So we are going to read inflation, monetary policy, money and banking. Money and banking के साथ ही we will read capital markets. From there, then we will go to fiscal policy and learn about taxation. Then this entire matrix will get completed. And these topics, these next set of topics are mostly asked in the prelims exam. It's not that they are not asked in the means, but the majority focus here, prelims, most questions are coming from here, right? This will also complete our discussion on all macroeconomic objectives of the government. The only thing that will be left after this will be international economics and sectors of the Indian economy, right? So international economics will take 1 or 2 lectures, and then one sector will take 1 or 2 lectures each, right? So this is our matrix going forward. Now, before I talk about this, I just wanted to show you something. Last time when we were discussing, I talked to you about our performance in the interview and everything regarding that. So just want to show you, just wanted to show you this. So if you were to see on my Telegram, I had actually posted a form asking people to sign up for my, for our interview guidance program, and wanted to ask them how, they have cleared the interview and what sort of courses they have relied on, etc. So this is again internal data. This is not a claim. I'm just showing this to you. There will be a video on YouTube to tell you all of this. But as you can see, these are the people who were part of our courses and are giving the interview this year.
this number, if you add it, comes out to somewhere close to 614. Of course, there will be some duplicate entries here, but broadly this is the data, and this is not our data. ये हमारा data नहीं है. This is the data that students have given us. They have themselves filled the form and given us this data. एक internal data होता है जो हमारे पास था, एक है जो लोगों ने खुद भर के हमें डेटा दिया है. वो जो गूगल फॉर्म आज भी मेरे टेलीग्राम पे मैंने उसका एक लिंक डाला है. People have filled this and given it to us. So I'll just like to show you how we have performed in the means. Since you are our students, you should know this. I'm assuming most of you will be giving the means next year. So if you look at this data, you can see that this is the number of people who were in MMP plus, then WriteSmart, then ethics, then essay, then GS3, GS1, GS2, live answer writing sessions with WriteSmart, our mains test series, MAP and MAP plus, and people who were coming from last year. People who were coming from last year, like people who had enrolled in 2023 and now they are giving the interview this year. MMP plus, of course, you all know, is our flagship mains course that includes all of this. So basically, I mean, if I look at this data, इससे मुझे एक तो मुझे क्या पता चलता है और आपको क्या सीख लेनी चाहिए. The first thing you need to realize from this is this figure. The fact that there are a lot of people who were already preparing for means last year. उन्होंने last year means की तैयारी करी है, right? And they have now cleared the means this year. So before prelims, studying for means is very important. This is the first thing that we can draw here. And the second thing we'd like to tell you is that in mains, creating differentiation is difficult. So good content counts when it comes to mains. We have worked hard in our mains examination, and that is why this is the data that Saarthi IAS is able to produce. Most people will claim the result after the interview in terms of, okay, interview guidance program, etc., etc. But this data at this stage shows that we have really created a difference at the mains level. And of course, I'm very, very proud of the data that has finally emerged. But I just wanted to show you this, that if you prepare for mains before you are entering the prelim stage, or at least some level of preparation you are doing before you are entering your prelims, that helps a lot, right? All right, chalo. अब self तारीफ काफी हो गई, अब start करते हैं. So now the next set of topics that we are going to read, like I have told you, are going to belong majorly to the prelims examination. So I have thought of a slightly different method of teaching you these topics, which is to show you questions first. अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम टॉपिक पढ़ते थे, फिर हम क्वेश्चंस देखते थे, right? So this is what we were following, कि टॉपिक पढ़ा, फिर हमने क्वेश्चंस देखे, फिर हमने उन्हें सॉल्व किया. This is what we were doing. Now what I'm going to basically do from now, and especially this is something that you can use even in your other subjects when you are specifically reading for the prelims. This is a very good technique. Okay, before reading the topic, before reading this topic, you look at the questions first. आप पहले questions देख लो, right? हम अभी questions solve नहीं करेंगे. I don't want you to give me answers to these questions because of course I have not taught a lot of these topics. But I want you to take a look at all the questions that have come on the topic of inflation. What that will do is that will tell you what is important and what is not important, what sort of questions are asked. And since this is a very prelims heavy topic, this is the approach we will follow. I thought I had turned the chat private. If it's not private, I'll just do it. Okay, should be private now, in my opinion. Right, at least from my side, from my end, it looks private now. Okay, so we'll first look at the questions. हमें समझ आएगा कि क्या important है और किस type के questions आते हैं. Especially we are doing this here because these are very, very prelims oriented topics. Start करते हैं. Right, let's take a look at all the questions. Again, I don't want you to give me the answers. मैं नहीं चाहता कि आप आंसर दो. मैं नहीं चाहता कि आप try भी करो आंसर के. I just want you to read the question. If you read the question, at least you will get a hint of what sort of questions are asked. So let's look at this. We will read it together. Let's look at the first question. With reference to the Indian economy, consider the following statements. This was asked in 2022. If the inflation is too high, RBI is likely to buy government securities. We don't know what are government securities yet, but we have understood that this sort of question is asked. Then,
if rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. So they have linked here inflation to government securities. They have linked to the job of the RBI. They have linked it to the level of dollar in the economy. If interest rates in USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. So inflation is also linked to some international economics. Right now I just know this much. I don't want the answer. ठीक है, हम आंसर देखेंगे when we have studied all of this. Right now I'm just trying to understand कि important क्या होता है. This is question 1. Let's read question 2. देखो, question 1 में ही question 2 का आंसर है. In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? उन्होंने ऊपर ही दे दिया था कि मेन जॉब किसका है, आरबीआई का है, right? They have given this ऊपर only. And the interesting thing is these two questions are from the same paper. They are both questions of prelims 2022. यार मैंने अभी बोला ना आंसर नहीं देना. Don't write the, I know you know the answer. मत दो, आता है तो भी मत दो. ये सेकंड क्वेश्चन का तो आता ही होगा आपको आंसर, हम ये डिस्कस कर चुके हैं. वी डोंट वांट टू नो द आंसर नाउ, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस और व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. ये देखो, द इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर इज दीस आर बोथ क्वेश्चंस ऑफ द सेम पेपर. सेम पेपर में उन्होंने क्वेश्चन पूछा. तो अगर कभी कभी जब हम प्रीलिम्स देते हैं, द लेसन हियर इज जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे भी आंसर्स निकलते हैं. तो दिस इज आल्सो समथिंग वी नीड टू फोकस ऑन. आगे चलते हैं. थर्ड, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, demand pull inflation. So there is something called demand pull inflation can be caused or increased by which of the following. ठीक है, तो demand pull inflation पे क्वेश्चन है. So यहाँ पर मुझे क्या समझ आया, they also want me to learn the various types of inflation. Now they have given certain policies: expansionary policies, fiscal stimulus, inflation indexing of wages, purchasing power and interest rates. These words should look familiar to you now. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनमें से कोई ऐसा वर्ड है कि समझ ही नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है, बट वी विल स्टडी ऑल ऑफ दिस. सो अगेन, इन्फ्लेशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस केम इन प्रीलिम्स 2021. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं. Which of the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? We have solved this question. Recession is fall in the aggregate demand in the economy. When aggregate demand is falling, we have to increase aggregate demand. Aggregate demand includes C plus I plus G plus X minus M. Here, government spending was what we had seen can be done to increase the aggregate demand, and as you can see, there is options also, similar to that. So, cut in tax rate, increase in interest rate. So, this is fiscal policy, monetary policy. क्या करना चाहिए recession के time पे? Government spending को क्या करना चाहिए? Again, fiscal policy, monetary policy. So, same linkage that we were studying, that same linkage has been asked here. We have solved this question. Answer is B, but just to get an idea. Next, which of the following is likely to be most inflationary in its effect? सबसे ज्यादा inflationary इस सब में से क्या होगा? Let's look at the options. Repayment of public debt, borrowing from public to finance a budget deficit, borrowing from banks to finance a budget deficit, creation of new money to finance a budget deficit. I don't want you to give the answer, but from here we can understand that again the linkage between fiscal policy, taxation, government spending, government borrowing, the relation between fiscal policy and money, and its relation to inflation is asked here. Fiscal policy, money and relation to inflation. So again, very connected topic is there. तो हम ठीक कर रहे हैं सब कुछ साथ में पढ़ के. And this question has been repeated as it is twice. दो बार आ चुका है question, same to same question. Next question देखते हैं. Asked in 2020. The weightage of food in consumer price index is higher than that in wholesale price index. Now these words we have not heard before. I have not heard what is CPI, what is WPI. मैंने अभी से पहले नहीं सुना है. The WPI does not capture changes in prices of services, which CPI does. Okay. Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation, deciding on changing the key policy rates. So again, we are talking about the responsibility of Reserve Bank of India. But we have to know about these terms CPI, WPI. ये मुझे समझ आ गया ये क्वेश्चन देख के. Now, next. With reference to inflation in India, which of the following statements is correct? Controlling the inflation in India is the responsibility of Government of India only. The Reserve Bank of India has no role in controlling inflation.
Decreased money circulation helps in controlling inflation. Increased money circulation helps in controlling inflation. Money circulation effectively comes from our idea of monetary policy. So again, studying monetary policy and inflation together is right. And again, whose role it is to control inflation becomes an important topic. Government की है या RBI की responsibility है या दोनों की है, that becomes important. Now, next. Let's look at the next question. Inflation benefits the debtors. Inflation benefits the bondholders. Which of the following is correct? So here, effectively what is being asked is the effects of inflation. Effects of inflation on various people. Someone who is a debtor, someone who is a bondholder. We'll read these terms, obviously. We'll read this topic also, effect of inflation. But here we can understand what is being asked. Then let's look at next question. ये question में हमने किया था, slightly modified form में किया था because हमने money supply नहीं पढ़ा था. A rise in general level of prices. A rise in general level of prices. What is this? This is nothing but inflation itself. May be caused by increase in money supply, increase in aggregate output, increase in effective demand. This we have seen. Aggregate supply and aggregate demand we have already seen. Money supply we had not seen. This obviously comes in the topic of monetary policy. Right? Now, which of the following are used to estimate the food inflation in India? Now, to estimate food inflation, again, this becomes a topic. This topic where we see terms like CPI, WPI, this topic fits into measurement of inflation. This is one of the key topics we are going to study today only. ये topic हम आज ही पढ़ने वाले. Measurement of inflation, how it is done. First we'll understand the concepts. Tomorrow we'll understand the facts of it. Then, let's look at this. Central government determines the inflation target in consultation with RBI in terms of consumer price index. Again, this term CPI has appeared. And again, the responsibility of controlling inflation. This is an important topic. Then, at present, monetary policy framework in India is operated by central government. Again, the responsibility of inflation has been asked multiple times, and measurement in terms of CPI, WPI also I have seen multiple times. Then, sustained decrease in the general price level is called. So, abhi humne dekha tha inflation. Now, there are various other types of this called deflation, stagflation, devaluation, recession. So, these terms also I need to understand. This is also something that's important. Next, what measures can be used by the government for combating inflation? Increasing non-planned expenditure, more subsidies on exports, increasing the rate of interest, and reduction in CRR, right? Now, this term CRR is directly related to banking, right? So, and again, we have seen these things. We have at least read something like this with regards to aggregate demand, aggregate supply, etc., etc. So again, controlling inflation is an important topic that is being asked. Answer छोड़ते हैं इसका. Next, which one of the following situations can lead to inflation? I think this question we have done. Rapid growth of aggregate demand outweighing supply looks correct. Sluggish growth of aggregate demand is not right. Reduction in money supply, higher levels of unemployment. So we've read unemployment. We've not read about money supply. This we'll read when we talk about monetary policy. I think this will be our topic on Monday. Then aggregate demand and aggregate supply also we have read, right? So again, we can see gives me an idea that again, what leads to inflation, what leads to the controlling of inflation, those type of topics are important. Then next, situation in the economy in which is growing slowly along with rapid inflation, right? So there's rapid inflation and the economy is not growing also. What is that called? So again, various words are here: stagnation, deflation, stagflation, recession. So this is important. Now, subprime crisis. Subprime crisis is a term associated with which one of the following? Now, subprime crisis, again, if you would be aware, this is general knowledge. This is actually the crisis that happened in the US, the global financial crisis that happened in the US in the 2008-9 years, related to an economic recession. But again, we'll see that here also. Then, inflation in India continued to be moderate during this level.
there was significant reduction in food inflation, particularly pulses and vegetables during this period. So this becomes an important new topic that I am seeing, that is inflation levels. What is the inflation level in the economy currently? So measurement of inflation was important, and inflation level also became important. So this is one more thing. Then wholesale price inflation has increased, right? So sorry about this. Wholesale price inflation is again linked to the idea of WPI. This we have seen. Increase in India during 21-22 due to which of the following factors? So again, what leads to the increase in inflation? This is again a factor that has been asked. Then, which one of the following is an appropriate description of deflation? We have seen that there are various terms that are asked, so deflation also is something that is asked. Now, which are the side effects or effects of devaluation or depreciation of a currency? So devaluation or depreciation. So again, linkage to the exchange rate in the economy. This is international economics. So exchange rate and inflation also becomes a topic, right? So exchange rate and inflation is also a topic that has been asked. ये पहले भी पूछा गया था. Now, which one of the following brings out the CPI for industrial workers? That means again this term CPI is appearing linked to the idea of measurement of inflation. As per use-based classification of the index of industrial production. So there is one more index. So far we had seen consumer price index, wholesale price index. This was being asked. Now index of industrial production is being asked. Maximum weight has been assigned to what? So that is a question again linked to another index. Then, which of the following statements, answers छोड़ते हैं, which of the following statements regarding weightage of different articles in WPI is correct? So again the topic of measurement of inflation. So far, if I was to look at the number of questions I've gotten specifically from inflation, there was some discussion on what leads to inflation. Inflation क्यों होता है? Right? This is one of the topics. Then one of the topics became the measurement of inflation. How am I supposed to measure it? Then one of the topics became the controlling of inflation. In the controlling of inflation, we saw questions on responsibility. We also saw questions on, with responsibility, we saw measures that could be used to control inflation. There is also a question here with regards to effects of inflation. What does inflation lead to? Who does it benefit? Who does it cost? Etc. etc. Inflation में यही questions थे. Now, leads to inflation is also linked to, there were some other linked topics, like obviously a topic of monetary policy was there, how money supply impacts inflation. A topic of exchange rates was there, how exchange rates lead to impact on inflation. Right? There was also fiscal policy and inflation, whether government is likely to buy bonds, how government is likely to, sell bonds in the market, buy securities in the market, etc., etc. Then one more topic that was there related to inflation was some various types of inflation, or types is not the right word, but various different sorts of keywords that are linked to inflation. For example, deflation, stagflation, recession, etc. These sort of questions were there. Now when I have mapped this out, now I will start reading this topic. ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूंगा ये टॉपिक पढ़ना. अब मुझे पता है कि क्या आने वाला है. So the reason for me doing this with you is that I hope that now when I am teaching you this, you will automatically know what is important, and at least at that time your attention will be fully focused on what I am teaching you. ठीक है, समझ आया? Now for any PYQ analysis that you have to do, आप आज के बाद कोई भी टॉपिक पढ़ो, स्पेसिफिकली जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, it is generally a good idea to look at it like this. Right? When we were getting started, we were actually getting more and more accustomed to the idea of this syllabus.
But now when we are comfortable with the economy, we are now going to have this sort of discussion first so that we know what is important and then we are going to read it, ताकि हमारा focus ज़्यादा रहे, right? Now, एक चीज और कर लेते हैं. Let's look at the mains questions also. Now, mains questions from inflation are only 3 so far. We have seen this. Besides welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve poor and underprivileged sections of society. Again, this can be linked to the idea of effects of inflation, but here inflation unemployment linkage is there. थोड़ा बहुत हमने इस बारे में डिस्कस किया है. We will read about this, of course, in a lot more detail as we go forward. Do you agree with the view that steady GDP growth and low inflation have left the Indian economy in good shape? So like we were saying there, again, the level of inflation in the Indian economy at the current moment, this becomes a very important thing. Now, where can we read this level? I did not write this in the matrix that we were making for a specific reason. Where can we read this level? कि आज India का level क्या है and how is the projection going forward? We can read this in the economic survey. So this sort of questions on level of inflation, अभी क्या है? We will read this once the economic survey is released. That will be in February of next year. Then, what are the causes of persistently high food inflation? Again, a question related to level of inflation in India. Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI. Recurring theme is there in controlling this type of inflation. That in controlling we use monetary policy. वो बनाता कौन है RBI? इन्होंने खुद ही आंसर में दे दिया. So only if I read the previous year questions, I get a fair idea about a topic. Now this question, if this is my hypothesis कि levels हमें economic survey से पढ़ने चाहिए, तो ideally this topic should have been given in the economic survey this year, and this statement is true. If you read the economic survey of this year that came out in July, the idea of persistent high food inflation was discussed in a lot of detail, and this question is directly from the economic survey of this year. ठीक है? Now we have seen what we require in terms of inflation. अब ये मेरा काम था. बाकी आज की क्लास में मोस्टली काम आपका है, because we have, you might not realize this, but we have actually already studied the topic of inflation almost completely, except for measurement. Measurement I will teach you in detail. इसके अलावा हम ऑलमोस्ट बाकी सारी चीजें पढ़ चुके हैं. आपको शायद ये रियलाइजेशन नहीं है, बट अभी आपको समझ आ जाएगा. नाउ do you remember this graph? Do you remember this graph? We have made this graph earlier also, that there is an aggregate demand. Aggregate demand is denoted by C plus I plus G plus X minus M. Do you remember this graph of aggregate supply? Right? Aggregate supply is total supply put together. Now this PL here, this is what? Price level in the economy. Average price level in the economy. And this here was real output, which I can also write as real GDP. This we have read before. Now inflation is nothing but increase in the price level in the economy. If this value increases, if this value gets here, it becomes inflation. और कुछ नहीं है, खत्म हो गया इन्फ्लेशन का टॉपिक. अब कल मिलेंगे. ठीक है, इतना ही था. प्राइस लेवल यहां से यहां पहुंच गया तो इन्फ्लेशन हो गई. दिस इज व्हाट इज इन्फ्लेशन. नाउ सिंस वी हैव रेड माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सच डिटेल, ये इसीलिए किया गया था कि अब आपको यहां पे रट्टाफिकेशन ना करनी पड़े. राइट? So we will, most of this class will actually go in you revising what we have already learned in terms of inflation now. At that time we were seeing it in terms of growth, कि इससे output को क्या होगा, इससे unemployment को क्या होगा. Now we will look at the same factors, but we will now care about this variable, what happens to price level in the economy. पहले हम देखते हैं what is inflation. Right? First let us understand what is inflation. Inflation is defined as general increase. Every word here is very, very important. General increase in the price level of the economy. General increase. General means average. The average price level should increase. Everyone's price level should increase. If I say tomorrow that the
price of this pen has increased from 10 rupees to 50 rupees, that is not inflation. It cannot be for certain specific goods. It is not specific increase in price level of one good. It is general increase in price level of all goods. So the average price level or the overall price level in the economy must increase. This is what is inflation. Now, what is price level? Now, this discussion is important and you will understand this, and you will also understand that these questions were asked in the PYQs that we had seen. What is price level? Let's say, पहले हम प्राइस डिस्कस करते हैं, फिर हम प्राइस लेवल समझेंगे. Let's discuss price. What are the factors that determine the price of anything? क्या? And today I would like you to actively participate. I hope the chat is private now. एक बार अगर chat private है तो yes लिख दो सब. मैंने अपने साइड से कर दी है. If the chat is private, just write yes. You should not be disturbed by anyone else's messages. Just write yes, so I will know. So I will keep asking you and I will ask you to. Okay, great. Right. So what are the factors that are determining price? Right. कौन-कौन से factors यहाँ पर determine कर रहे हैं price को, इसको देखते हैं. So far we have read that there are two factors. One are supply based factors and one is demand based factors. Right? यही दोनों factors हैं जो हमने पढ़े. अब price of anything is written as rupees XYZ. So I can say this pen is worth rupees 10. So if I write this pen is worth rupees 10, there are two things here. This is quantity of money. Right? This is the quantity of money. How much money does this pen cost? And this is the measuring unit. This is the unit through which I am measuring the amount of money spent. So I am spending 10 of rupees. 10 rupees I am spending to buy this pen. This is the price of this pen. Now, if there has to be a change in this price level, one option is that this can change. This pen can become from rupees 10 to rupees 50 to rupees 100 or even to rupees 5. Price can come down also. So one is change in the quantity of money or change in the quantity of this amount. The second, there can be change in this. Now this is not intuitive directly. ये हमें एकदम से समझ नहीं आता. तो हम एक काम करते हैं. हम अभी के लिए assume करते हैं कि इंडिया में कोई करेंसी नहीं है. Let's assume that India does not have a currency of its own. Right? अभी तो हम सबके पास पैसे हैं. We have rupees. So we will not assume that. We will assume that we have no currency in Indian economy. And everything is exchanged through the idea of gold. ठीक है? सब कुछ gold से exchange होता है. So you want to buy this pen, you give 0.001 gram of gold. You want to buy this coat, you give 0.005 gram of gold. Something like that. Okay? So everything is exchanged through the idea of gold. So I am saying the cost of this pen or the price of this pen is 0.05 grams of gold. ठीक है? Now this 0.05 is what? This 0.05 is quantity. Right? And grams of gold is measuring unit. I am measuring the value of this pen in grams of gold. Earlier I was measuring the value of this pen in quantity of rupees. Now I am measuring the value of this pen in quantity of grams of gold. Right? Up. You know for a fact that even this value keeps changing. What is the value of 1 gram of gold today is not the value of what is not the same value it was 5 years ago. आज जो 1 gram of gold की value है, 10 grams of gold I think is somewhere around 80,000 now, right? 70-80,000. I'm not sure. 70-80,000 is the level. I think it was 50,000 years some time back. Now it's 60,000. Okay. So now if 10 grams of gold cost rupees 60,000, sometime back 10 gram of gold used to cost rupees 40,000.
राइट नाउ दिस वैल्यू दिस चेंज है ना, आज मान लो 60,000 रुपए का है, 1 तोला कहते हैं, राइट? सो 1 तोला ऑफ गोल्ड टुडे इज फॉर 60,000 रुपीज, अर्लियर इट वाज फॉर 40,000 रुपीज. दिस वैल्यू हैज आल्सो चेंज्ड. तो अगर मैं कहूं कि पेन की वैल्यू 0.05 ग्राम्स ऑफ गोल्ड है, आई से दैट दिस पेन in 2011 costed 0.05 grams of gold. This pen in 2024 also costs 0.05 grams of gold. Okay, right? So let's say this is what is happening. In 2011 the value of gold was, let's say, 40,000 rupees. In 2024 the value of gold is 80,000 rupees. ठीक है, ले अभी के लिए मान लेते हैं. Now there is no change in the quantity. This pen has continued to cost me 0.05 grams of gold. It has continued to cost me 0.05 grams of gold. So there is no change in the quantity. Where is the change coming from? Change is coming from the measuring unit. However, I decide to value this pen, I have decided to value it in gold. Effectively at this time, its value was 0.05 grams of gold. Now it is 0.05 grams of gold. So 0.05, the quantity of gold required has not changed. But has the value of this pen changed? Price same है, but क्या value change हुई है? Is the value changing? Yes or no? And if changing, by how much is it changing? What was the value here and what is the value here? What is the value here and what is the value here? बताओ. यहां पर the value of this pen here, if this is 10 grams of gold, 1 gram of gold will be 4,000 and 0.01 gram of gold divide by 100 will be 40 into 5, so it will be 200. Right? अभी क्या वैल्यू है इसकी यहां पे? Let's say 40,000 was the price of gold at this time. So this was for 10 grams. So 1 gram will cost me 4k. 0.01 gram will cost me 40 rupees and this will be 200. And now same calculation I do here, it will be 400. Right? So even though the price that I am looking at, price यहाँ पर अभी we will just use these terms interchangeably, अभी ये सारी confusion solve हो जाएगी. The return price or the retail price that I am looking at, right, that has not changed, right? Return price has not changed, but the value has changed. Earlier it was for 200, now it is for 400. Calculation ऊपर नीचे doesn't matter. This is what the change has happened. Why did this change happen? Because there was change in the price of gold. ये जो measuring unit था, ये जो gold था, इसका भी खुद का एक प्राइस था, right? इसका भी खुद का एक प्राइस था. Now, what determines the price of gold in this context? Gold आज से 10 साल पहले महंगा था या सस्ता था और आज महंगा है. What is determining the price of gold? Gold की वैल्यू क्या डिटरमाइन कर रहा है? Gold की वैल्यू क्या डिटरमाइन कर रहा है? What determines the price of gold? Price of gold was earlier 40,000, now it is 80,000. Exactly, same factors, the demand and supply of gold. The same factors of demand and supply are also the same factors of demand and supply are looking at this. Right? आप भूल जाओ इसको, इस चीज को भूल जाओ. गोल्ड की अगर मैं नॉर्मली आपसे बात करूं कि आप बताओ गोल्ड का मार्केट प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? देयर आर ओनली टू थिंग्स, सप्लाई एंड डिमांड. सप्लाई ऑफ गोल्ड, डिमांड ऑफ गोल्ड. कल मान लो अ ह्यूज गोल्ड माइन इज फाउंड एंड 10,000 tons of gold is extracted.
at no cost, the price of gold will crash, right? मान लो कल बहुत ज्यादा गोल्ड की क्वांटिटी मिल जाती है, right? So the price of gold will crash, the supply will go up much higher. And similarly, if tomorrow it is found that putting gold inside your body can ensure that you will never ever die, कल मान लो ये बात क्लियर हो जाती है that if you eat gold you will live on for 10,000 years, then the demand for gold will increase. When the demand for gold will increase, the price of gold will increase, right? Should at least should be like that. So it is demand and supply that is determining it. So similar, now we will put this logic now to what we were seeing originally. इसी logic को, gold here was just to give you an example, right? Because this is not directly intuitive in terms of, when we discuss this in terms of currency, this thing is not directly intuitive. That is why we will put this same logic now to currency, and you will understand most of the questions why they were linked. This pen costs rupees 10 today, right? This pen costs rupees 10 today. Either this value can change, this value, if this changes from rupees 10 to rupees 20 to rupees 30 to rupees 40, then there can be a change in the price of this pen. Or whatever is the value of money, whatever is the worth of one money. हमने gold की worth देखी, gold की worth we saw in terms of rupees. We said that 1 gram of gold or 10 grams of gold is worth 40,000 rupees. It is difficult to see what is the worth of money. What is money worth? वो देखना मुश्किल है, वो मैं तब समझ आएगा जब हम monetary policy देखेंगे. But similarly, like the value of gold, gold की worth यहाँ 40,000 थी, gold की worth यहाँ 80,000 है. Similarly, the value or the worth of this rupee can also change. What was changing the worth of gold? The demand and supply of gold. What will change the worth of rupee? The supply and demand of rupee. जैसे यहां पर in this case gold की supply and demand was determining, gold की supply and demand was determining कि gold की worth कितनी है. पहले 40,000, अब 80,000, right? Similarly, now supply and demand of rupee can influence this inflationary value or this price. This is price. Price को influence करने के लिए या तो there can be a change in this quantity, या तो ये change हो जाए, या तो quantity change हो जाए, या इस inherent value of rupee, rupee की worth क्या है, supply of and demand of rupee. So rupee की worth, which is determined by supply and demand of rupee, this can change, right? Now, so if price has to be impacted, it can either be impacted by this quantity being changed, or it can be impacted by supply and demand of rupee. Supply and demand of rupee. Rupee is what? Money. So money supply and money demand. Money supply and money demand also influences the price level. समझ आई ये बात? तभी याद है मनी सप्लाई पे इतने सारे क्वेश्चंस थे कि मनी सप्लाई को क्या होगा, एक्सपेंशनरी मनी सप्लाई, contractionary monetary policy, because money supply and money demand can also contribute to the price. And since money supply and money demand can also contribute to the price, the inherent worth of money is important. अब I can look at this money supply and money demand. अभी मैं आपको money supply पढ़ा नहीं रहा हूं, money supply we'll read on Monday. But अब मेरे को समझ आया that in case I have to write price, I write as rupees 100 for example. So I can write this as 100 units of 1 rupee. वहां पर क्या था? That was 0.05 grams of gold. This is what we wrote.
I can write this as 100 units of 1 rupee, है ना? ऐसे लिख सकता हूं. नाउ या तो ये वैल्यू चेंज हो जाए, दिस क्वांटिटी कैन चेंज, दिस क्वांटिटी कैन चेंज इन इटसेल्फ, एंड और दिस कैन चेंज. द वर्थ ऑफ 1 रुपी, 1 रुपया कितनी चीजों के वर्थ है. अगर हम 1947 की बात करें, 1 रुपी वॉज वर्थ अ लॉट ऑफ थिंग्स. 1 रुपी में पूरे महीने का खर्चा चल जाता था. अब 1 रुपी में हार्डली वी कैन बाय एनीथिंग. सो 1 रुपी की क्या वर्थ है, इवन दैट influences the price. And if we look at price से if we look at the, अभी मैंने प्राइस देखा है पेन का, अगर मैं सारे आइटम्स का प्राइस देखने लगूं, if I look at the price of all items in the economy, this price will become, अगर I start looking at price of all items in the economy, I can write this price as price level. Price level goes up or down. Change in price level, this I can write as inflation, or increase in price level rather I should write as inflation. Decrease को बताऊंगा क्या कहते हैं, decrease को is called deflation, but we'll discuss that. So now I can say that inflation can be influenced by, inflation से price level से price से quantity and measuring unit. Quantity change हो जाए, या तो ये 100 units change हो जाए कि पहले एक पेन 100 units of 1 rupee का आता था, now pen comes for 150 units of 1 rupee. Or this can change, the worth of 1 rupee can change. The worth of 1 rupee will be decided by the demand of 1 rupee or demand of money and the supply of money. So money supply, how much money is being supplied in the economy. Demand of money, how much people actually want money. And the quantity influences price, which influences price level, which influences inflation. So inflation is influenced by the supply of money in the economy. How much supply of money is there in the economy, it will influence inflation. ये बात समझ आई? If you have understood this, now at least for next 4-5 lectures, it's not going to be a problem. है ना? अगर ये ढंग से समझ आ गया और हम अभी दोबारा क्वेश्चंस देखेंगे तो शायद आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो. ये बात समझ आई? सप्लाई ऑफ मनी कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन लेवल्स, राइट? अब यहीं से थोड़ा आगे जाते हैं, यहीं से थोड़ा रिलेट करते हैं, है ना? गोल्ड हैज अ वेरी हाई वर्थ. गोल्ड होना बड़ी चीज है, गोल्ड की वर्थ बहुत ज्यादा है ना? इफ गोल्ड हैज अ लॉट ऑफ वर्थ, अब हम डिमांड को एक सेकंड साइड करते हैं. लेट्स इग्नोर द डिमांड फॉर अ मिनट एंड थिंक अबाउट द वर्थ ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गोल्ड. अभी डिमांड वाला फैक्टर हटा देते हैं. गोल्ड हैज अ वेरी हाई वर्थ. अज्यूम करो डिमांड इज द सेम, डिमांड स्टेज द सेम. गोल्ड हैज अ वेरी हाई वर्थ. दिस इज बिकॉज गोल्ड हैज लेस सप्लाई. है ना? गोल्ड हैज लेस सप्लाई, बहुत ज्यादा गोल्ड इज नॉट फ्रीली अवेलेबल, दैट इज व्हाई इट हैज अ हाई वर्थ. लेट्स टॉक ऑफ एनीथिंग लाइक पेन्स फॉर एग्जांपल. पेन्स हैव अ लो वर्थ बिकॉज दे हैव अ हाई सप्लाई. हर जगह मिल जाते हैं पेन, राइट? देयर इज अबंडेंस ऑफ पेन अवेलेबल, देयर इज अबंडेंस ऑफ पेन अवेलेबल, राइट? या वाटर देख लेते हैं, we can replace this with water. Pen is a manufactured good, so we can talk about water. वाटर की उतनी वर्थ नहीं है बिकॉज उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, दुनिया में हर जगह पानी अवेलेबल है, राइट? सिमिलरली आई कैन यूज दिस लॉजिक टू से दैट when money or my currency, when my currency will have less supply, when my currency will have less supply, it will have more worth. When my currency will have
more supply, it will have less worth. Same चीज है, gold has less supply, it is highly worthy. So when money supply is reduced, the worth of money will increase. When money supply is increased, the worth of money will decrease. Same logic is there. Same logic is there. This logic we will understand when we read the topic of monetary policy. When we read monetary policy, this is the logic we will understand. ये जो more and less supply of money है, यही logic सारा monetary policy में हमें पढ़ने को मिलेगा. And then from here we can understand its influence on inflation. अभी हमें बस एक चीज समझनी है, that inflation can be influenced by this. अगर हमें ये समझ आ गया है तो हम ये बात, एंड मोर इंपॉर्टेंटली बाय दिस, राइट, कि इन्फ्लेशन का इससे भी लिंक है. इन्फ्लेशन इज नॉट जस्ट दिस. इफ बोथ ऑफ दिस वी अंडरस्टैंड देन वी कैन गो फॉरवर्ड. ठीक है, अब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जो हमने क्वेश्चंस देखे अभी आपको समझ भी आएगा. इफ आई एम लुकिंग एट, लेट्स से आई एम लुकिंग एट डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट, के डॉलर वर्सेस रुपी का एक्सचेंज रेट क्या है, right? $1 should be worth 80 rupees, or $1 should be worth 50 rupees, or $1 should be worth 200 rupees. What will that value come from? वो वैल्यू कहां से आएगी? Demand and supply of dollar versus demand and supply of rupee. How many people want dollar? How many people want rupee? आपस में अगर डिमांड सप्लाई कंपैरिजन हो जाएगा दोनों का, तो एक्सचेंज रेट भी डिटरमाइन हो जाएगा. दैट इज व्हाई वी वर सीइंग क्वेश्चंस कि जब डॉलर का वैल्यू बढ़ता है तो इन्फ्लेशन को क्या होता है. इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखे. अभी मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा, अभी आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू, ताकि आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहे. टॉपिक्स तो हम पढ़ ही लेंगे. इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड नाउ. डिफिकल्ट पार्ट हमारा इकोनॉमी का हो चुका है. वो जो हमने अभी तक पढ़ा है वो मच मोर डिफिकल्ट देन व्हाट वी आर गोइंग टू रीड नाउ. बट डॉलर रुपी कैन ऑल्सो हैव अ वैल्यू इन देमसेल्व्स. Their worth in themselves can also be counted, कि डॉलर कितने का और रुपी कितने का. This worth in themselves, ये जो वैल्यू है ये, this gets determined by demand and supply of dollar and rupee relative to each other. कितने लोगों को डॉलर चाहिए और कितने लोग डॉलर देने के विलिंग हैं, वर्सेस कितने लोगों को रुपी चाहिए और कितने लोग रुपी देने के विलिंग हैं. उस बेसिस पे ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी. This will influence worth. This worth will influence inflation. यही क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे थे. This is exactly what was being asked, कि exchange rate fall होगा तो inflation पे क्या होगा, etc etc. Then supply of money obviously directly influences worth. Then worth influences inflation. इस पे भी बहुत सारे questions थे कि money supply बढ़ा देंगे घटा देंगे तो क्या होगा inflation को. So this is the entire matrix that we now have to understand. So we will go step by step. We will go step by step. अभी में हम समझ नहीं रहे हैं, हमें बस ये पता होना चाहिए that all these topics are linked. We will understand them step by step. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं our discussion on inflation. For now, when we look at inflation, we will look at general increase in price level of the economy. ठीक है, जनरल मतलब एवरेज प्राइस लेवल. कैन नॉट से कि एक पर्टिकुलर पेन का प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन हो गई, ऐसा नहीं है. एवरेज प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. Price level or price is seen in two terms, measuring unit and quantity. Increase in price level, inflation क्या है? General increase in price level. Increase in price level can be due to measuring unit and due to increase in quantity. या तो ये quantity ही बढ़ जाए कि पहले something was ₹50, now it is worth ₹100. तो या तो quantity ही change हो जाए या फिर measuring unit की worth change हो जाए. इन दोनों चीजों से इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ता है. लेकिन अभी फॉर द पर्पस ऑफ टुडेज क्लास एंड टुमारोज क्लास, हाफ ऑफ टुमारोज क्लास आई शुड से, वी विल ओनली लुक एट दिस. अभी हम एक एक करके हम देखेंगे. तो पहले हम ये वाला फैक्टर देखते हैं. जब हमें ये वाला फैक्टर समझ आ जाएगा फिर हम ये वाला फैक्टर देखेंगे. दिस अंडरस्टैंडिंग मेजरिंग यूनिट का वर्थ ऑन इन्फ्लेशन इज द आइडिया ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. यही मॉनेटरी पॉलिसी है. ये हमें समझना है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन. अभी हम मान लेते हैं कि इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, नथिंग इज चेंजिंग हियर.
For now, we will assume nothing is changing here to understand this factor first. Then we will understand the second factor. ठीक है? Then we will understand the second factor. Clear? This much is understandable? यहां तक समझ आ गया? So for now we will assume that measuring unit, which is rupee, is constant. For now we will assume measuring unit is constant, and more on this when we discuss monetary policy. ठीक है? All right. अब लार्जली मेरा काम खत्म और आपका काम शुरू. हमने क्या देखा कि इन्फ्लेशन क्या है? Inflation is change in the price level. This is price level, this is output. This is aggregate demand. This is aggregate supply. So inflation can be changed, or inflation might happen. This price level can go up or down due to either something that has changed aggregate demand, or something that has changed aggregate supply, or something that impacts both. ऐसा भी कुछ हो सकता है जो दोनों चीजों को इम्पैक्ट कर रहा हो. सो अब मुझे क्या याद होना चाहिए इन्फ्लेशन पढ़ने के लिए? अब मुझे याद होना चाहिए फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीगेट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड and determinants of aggregate supply. If this I remember, then I am completely able to write this topic here. अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? या तो एग्रीगेट डिमांड चेंज होगी या एग्रीगेट सप्लाई चेंज होगी, तभी प्राइस लेवल चेंज होगा, राइट? एनीथिंग एल्स कैन नॉट चेंज. अब एग्रीगेट डिमांड चेंज होने के कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, एग्रीगेट सप्लाई चेंज होने के कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं. अगर मुझे ये दोनों याद हैं, नाउ आई नो व्हाट विल कॉज इन्फ्लेशन एंड व्हाट विल नॉट. एनीथिंग दैट, एक चीज और देख लेते हैं, फिर ये फैक्टर्स मैं आपसे एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा. एक चीज और देख लेते हैं. इस इकोनॉमी में, जिस इकोनॉमी ये जो आज तक यहाँ पे अभी जहां पे है, इस इकोनॉमी को मैं अगर अभी देखूं तो आई कैन से दिस इज एग्रीगेट डिमांड, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है? And I can say that this is the current price level. This is PL equilibrium. This is Y equilibrium. है ना? अब let's say there is something here. यहां पर कुछ है. This point here is the price level. अगर मैं इसको ऐसे खींचूं, ऐसे अपनी तरफ, ये let's say I am taking it like this. This will be called what? Pull or push. Towards this side it will be pull or push. This side it will be obviously pull, right? इधर लेके जाऊंगा तो pull, और अगर इस तरफ लेके जाऊंगा तो push. ये ऐसे लेके जाऊंगा, ऐसे push, और ये ऐसे मैं pull करूंगा. अपने साइड करूंगा तो pull, उधर की तरफ करूंगा तो push. Fair enough? अब देखते हैं. Let's say case 1, there is increase in aggregate demand. Aggregate demand in the economy has increased. तो अब aggregate demand increase होगी तो where will the aggregate demand curve shift? It will shift outward. This will become the new aggregate demand curve, AD1. What will be the new price level? Price level will be this, PL1, right? PL1 is now higher than PL equilibrium. So I can say there is a general increase in price level in the economy. Therefore there is inflation. ये एवरेज प्राइस लेवल है, ये किसी एक गुड का तो नहीं है. हमने मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बना के देखा है. वी हैव रेड दिस बिफोर. नाउ आई कैन से दैट इन दिस केस there is a general increase in the price level in the economy, right? Up, general increase in price level happening towards this side because of demand. This is called demand
pull inflation. Because there was a higher demand, the demand has pulled the price up to this level. Increase in aggregate demand has pulled the price up to this level. Demand pull inflation. ठीक है? Let's look at the second case. This is aggregate demand. This is aggregate supply. Now let's say for some reason there was a decrease in the aggregate supply. There was some supply side shock. So in this case, aggregate supply will move inside. So it will look like this. So I will say this is aggregate supply 1. Earlier the price level was price level equilibrium. Now the price level is price level 1. Here also I can see that price level 1 is greater than price level equilibrium. So in this case also there is a case of inflation. If inflation has happened, now it has happened in this direction, right? So this should be called push inflation. Ideally it should be called supply push inflation, but the term we use here is cost push inflation. And why do we use the term cost push? Why does supply generally decrease? Why does supply generally decrease? Because the cost of factors of production increase. Cost of factors of production बढ़ेंगे तो aggregate supply कम होती है, right? That is the major factor that is controlling aggregate supply. ये भी हम पढ़ चुके हैं. So cost push inflation is the term that is used if it is supply side factors leading to inflation. I will call it cost push inflation. If it is demand side factors leading to inflation, I will call it demand pull inflation, right? I am sure many of you would have heard this term before. ऐसा तो कई लोग होंगे जिन्होंने ये term सुन रखी होगी. But I am also sure कि आज तक रट रखी होगी कि demand side पे pull होता है और cost side पे push होता है, right? But now you know the reason. Graph बना के things become clear, है ना? So demand pull and cost push. Demand pull inflation towards this side, cost push inflation towards that side, है ना? ठीक है. Now, so effectively what is causing inflation? Inflation occurs due to change in aggregate demand and change in aggregate supply. या तो aggregate demand change हो जाए या aggregate supply change हो जाए, है ना? यही हो सकता है. Now let's talk of changes in aggregate demand. Now this we have read. अब ये आपको याद होना चाहिए. We will go through this quickly. ये हम पढ़ चुके हैं. I hope you remember this. याद है हमने पढ़ा था. ये same notes हैं. These are not new notes. याद है? These are the same notes. वही notes हैं आपके पास हैं ये. है ना? अब जल्दी से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. What are the factors that can cause a change in aggregate demand? ठीक है, एक काम करते हैं. I will give you a break of 5 minutes. ब्रेक नहीं है ये. This is not the break. This is actually test. अब ये आप करोगे या नहीं करोगे ये आप पे है. अगर आप मेरी जगह होते आपको डेफिनेटली मैं कहता कि बिल्कुल करो, क्योंकि दिस विल हेल्प यू रिवाइज मच बेटर. ठीक है, आप एक काम करना प्लीज. In these 5 minutes, list down all the factors. List down all the factors that can cause a change in aggregate demand and change in aggregate supply. जो भी factors aggregate demand को change करते हैं और aggregate supply को change करते हैं, जो आपको याद है. No cheating, don't look back, अपने notes मत खोलना. जो आपको याद आता है, please write down all of those factors. जैसे कि income taxes was one factor, corporate taxes was one factor, right?
Whatever factors cause a change in aggregate demand and change in aggregate supply, please write those factors down. Then we will continue the class. एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे, फिर हमें समझ आ जाएगा, फिर हम मेजरमेंट देखेंगे. आपके पास 5 मिनट्स हैं. रिवाइज एज मेनी एज यू कैन और पीछे मुड़ के मत देखना. डोंट लुक एट योर प्रीवियस नोट्स, जस्ट राइट फ्रॉम हियर. ठीक है. Shrishti Gautam, change in aggregate supply, cost of factors of production, corporate tax, indirect tax. Indirect tax का इफेक्ट कहीं और भी था क्या? या indirect tax was in aggregate supply, एक बार याद करो. और corporate tax भी याद करो. Vinay good, Devinder good.
चलो अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि यार एग्रीगेट डिमांड के चेंजेस में, चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड को याद करो, तो द बेस्ट आइडिया हियर इज नॉट टू जस्ट डायरेक्टली रिमेंबर द फैक्टर्स। अगर मुझे एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर्स याद करने हैं, द बेस्ट आइडिया इज टू फर्स्ट डिवाइड इनटू कंपोनेंट्स। ये 5 कंपोनेंट है। If anything changes consumption, it will change aggregate demand. If anything changes investment, it will change aggregate demand. If anything changes government spending, it will change aggregate demand. If anything changes exports, it will change. If anything changes imports, it will change aggregate demand. So it is always better to remember in terms of components. अब आपको ज्यादा चीजें याद आने का लाइक्लीहुड है। अगर आप ओवरऑल याद करोगे तो कम चीजें याद आती हैं। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी रेड दिस, दीज आर ओल्ड नोट्स। ये नोट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंजम्पशन पे क्या क्या था? वी हैव ऑलरेडी रेड दिस। इनकम टैक्स का इफेक्ट रहता है, इंटरेस्ट रेट्स का इफेक्ट रहता है। इफ देयर इज इनकम टैक्स, इट डिटरमाइंस हाउ मच मनी आई हैव टू स्पेंड. अगर 100% इनकम टैक्स है, आई विल हैव नो मनी टू स्पेंड. इफ देयर इज ओनली 10% इनकम टैक्स, आई हैव 90% ऑफ माय इनकम टू स्पेंड. इंटरेस्ट रेट से फर्क पड़ता है, सेविंग्स कितनी करूंगा और ड्यूरेबल गुड्स पे कितना स्पेंड करूंगा, इससे फर्क पड़ता है. चेंजेस इन वेल्थ, the value of stocks and houses, this also we've read, हमने सारा पढ़ चुके हैं. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, if the economy is booming or not. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे भी देखा था हमने. कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, my expectations of future price level. लेवल ऑफ इंडेटेडनेस, कितनी मेरी ऑलरेडी बोरोइंग है, how much in debt I am already. If I am already in a lot of debt, I will not want to spend more, I will first want to repay the loan. Similarly, investment pay, we saw investment mainly we were seeing in terms of companies. So we saw the impact of interest rates, the impact of business taxes, the impacts of technology changing, the impact of business confidence in the economy, business expectations कि आगे क्या होगा, इकोनॉमी बढ़िया चलेगी नहीं चलेगी, level of national income, and again how much businesses are in debt. This will also determine their investment. Then of course there is government spending. गवर्नमेंट स्पेंडिंग का क्या इंपैक्ट है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. नाउ हाउ व्हाट चेंजेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग? दिस इज बेसिकली फिस्कल पॉलिसी. द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट टैक्सिंग एंड गवर्नमेंट बोरोइंग इज फिस्कल पॉलिसी. देन देयर आर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. व्हाटएवर हैज एन इंपैक्ट ऑन दीस टू विल हैव एन इंपैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड. सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई हमने देखा था. वी हैव सीन दिस ग्राफ. अगेन दीज आर ओल्ड नोट्स ओनली, हम ये देख चुके हैं ऑलरेडी. What causes change in aggregate supply? If there is a change in wages, if there is more wages, there is more cost of factors of production and there is less supply. If there is change in cost of raw materials, right? Raw materials की cost बढ़ जाती है, तो again there is increase in cost of factors of production, decrease in supply. Change in prices of imports, right? If I am importing my raw material, if imports become more costly and my raw material gets imported, then a costlier import will mean costlier factor of production. Costlier factor of production will mean less supply. Change in indirect tax or subsidy. Indirect tax is here. Direct tax was in aggregate demand. Indirect tax or subsidy ये भी हम पढ़ चुके हैं. How taxes and subsidies will impact my supply. And there can be supply shocks, sudden events that have a very strong impact, such as unfavorable weather conditions, favorable weather conditions, war. ये भी हमने देखा था. Then from here we also read this topic. ये भी previous notes हैं, just आपको याद करा रहा हूँ. Aggregate supply, aggregate demand, and this was the short-run macroeconomic equilibrium. Then how it changes when there is increase in aggregate demand. Now what is happening here? What is this factor called? ये क्या है? यहां अगर मैं इन्फ्लेशन, अभी हमने ये तब एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के टर्म्स में देखा था. नाउ इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट शुड आई कॉल दिस? What should I call this now? किस टाइप की इन्फ्लेशन दिख रही है यहाँ पे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन. The aggregate demand is pulling the prices up. Demand pull inflation is happening. Then this is decrease in price level, है ना? यहां पर प्राइस लेवल कम हो रहा है, राइट? Decrease in price level. Decrease in price level is called deflation.
डिक्रीज इन प्राइस लेवल कम हो गया, राइट? दिस इज डिफ्लेशन, ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेटिंग अ टायर एंड डिफ्लेटिंग अ टायर. नो, दिस इज नॉट, डोंट कॉल इट डिमांड पुश डिफ्लेशन. अभी ये मत बोलना. आपकी भावना एकदम सही है, यू आर सेइंग द राइट थिंग, बट डिफ्लेशन को हम ऐसे काउंट करते नहीं है. वी विल सी डिफ्लेशन, जब डिफ्लेशन पे आएंगे तो देखेंगे. यू आर थिंकिंग बिल्कुल करेक्टली. अगर आपने सचिंद्र, आई थिंक, if you've written demand pull deflation, demand push deflation, this is absolutely right. You are thinking right, but don't call it that. For right now, let's just call it deflation. ठीक है? Now, this is increase in aggregate supply. Increase in aggregate supply. Increase in aggregate supply is causing a reduction in price level. So this is what? This is also deflation. ये भी तो डिफ्लेशन है, राइट? अब there can be decrease in aggregate supply. This is causing the price level to increase from here to here. This I can call as cost push inflation. इसको मैं कह सकता हूं cost push inflation, right? This is also right. ये सेम ग्राफ है. अब it is the same graph, हम पढ़ चुके हैं. We are now just seeing it in the context of inflation. ठीक है? अब अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, if I look at this graph, this is demand pull inflation happening. In terms of inflation, this is demand pull inflation. But now let me look at it in terms of growth. There is increase in growth. GDP is increasing here. So there is obviously growth increase. Right? अब ग्रोथ भी हो रही है, इन्फ्लेशन भी हो रही है. इफ आई वॉन्ट टू इंक्रीज ग्रोथ, अगर मैं ग्रोथ बढ़ाना चाहता हूं तो इन्फ्लेशन करनी पड़ेगी, अगर मैं डिमांड साइड से कर रहा हूं तो, राइट? इफ आई एम कंट्रोलिंग एग्रीगेट डिमांड, इफ दिस इज द फैक्टर आई एम कंट्रोलिंग, if this is the factor I am controlling, if from this factor I want to increase the growth of the economy, if from this factor I want to see कि growth बढ़ रहा है, right? I want to increase growth, I will have to cause an inflation. ये बात तो क्लियर है? अब यही हम पढ़ रहे थे बहुत टाइम से. We have been reading in the newspapers, I have shown you multiple times this news of growth inflation trade-off. This is exactly what we've been reading in the news कि यार ग्रोथ भी करानी है. Q2 के जो हमारे फिगर्स आए ग्रोथ के अच्छे नहीं आए, इन्फ्लेशन हाई है ऑलरेडी, और ग्रोथ कराएं एग्रीगेट डिमांड से. अगर एग्रीगेट डिमांड से ग्रोथ कराएं तो अब इन्फ्लेशन बढ़ेगी. इन्फ्लेशन कम करना चाहेंगे, अगर इन्फ्लेशन कम करना चाहेंगे तो फिर ग्रोथ को थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, राइट? तो देयर इज ऑलवेज अ ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ. आपस में देयर विल ऑलवेज बी अ डिफिकल्टी इन डूइंग दीस थिंग्स. ये हम न्यूज़पेपर में देख चुके हैं, राइट? दिस आल्सो आई कैन लुक एट इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इफ इट इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से यहां अगर ये जा रहा है तो ग्रोथ बढ़ रही है. इफ ग्रोथ इज इंक्रीजिंग, जीडीपी इज इंक्रीजिंग, ग्रोथ इज हैपनिंग, देन अनएम्प्लॉयमेंट शुड गो डाउन. ये भी मैं देख चुका हूं. So there is an inherent linkage between unemployment and inflation. If I want to reduce unemployment, through growth, मैं aggregate demand change करके, growth करके unemployment को कम करना चाहता हूं, तो I will obviously have to increase the inflation. मुझे price level बढ़ाना पड़ेगा, inflation करानी पड़ेगी, तभी ये बात बनेगी, right? If I want to use aggregate demand to increase the GDP, want to use aggregate demand to increase the GDP, to then cause a reduction in unemployment, then I will have to increase the inflation. So unemployment and inflation also have a relationship with each other, right? This is also something we have seen. तो मैंने आपको इस कोर्स के स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया था कि एक ग्राफ से सारे कंसेप्ट समझ आएंगे. So we are now finally getting to that point where now, since we have read everything,
Now things will come into perspective, especially when we read inflation, everything else will also come into perspective. अभी तक वो inflationary angle हमेशा missing रहता था क्योंकि हमने inflation पढ़ा नहीं था, right? Then ये potential GDP का भी concept हमने पढ़ा. We read potential GDP. Then in potential GDP we understood what is the long run. What was the definition of long run? ये भी पुराने नोट्स हैं, कुछ नए नोट्स नहीं है ये. Long run was कि increase in prices also affects जो average price level में change है. Change in average price level also affects the factors of production. That is the long run. शुरू में short run में हम मानते हैं कि सिर्फ price level change हुआ, factors of production change नहीं हुए. When price levels start impacting factors of production, it is the long run. And what is the ultimate or final factor of production to get impacted? The most sticky factor of production, wages. ये भी हमने देखा, right? अब wages पे क्यों common नहीं apply करता था? Because एक तो they were a very large part of the firm's factor of production and they were sticky and they did not change in a short period. आराम से change नहीं होते थे, right? Right? So in the long run, what determines the output? ये भी हमने देखा था, full employment and efficiency. Then we understood the long run aggregate supply curve. The long run aggregate supply curve we connected to potential GDP. ठीक है? Potential GDP से we connected production possibilities curve. Then we understood something like full employment not being zero unemployment. We understood at full employment level we were at potential GDP. Full employment did not mean zero unemployment. ये बात मैंने आपको तब कहा था जब हम ये पढ़ रहे थे कि जब हम अनएम्प्लॉयमेंट समझ जाएंगे then we will understand this. Then from here we understood the concept of NAIRU, non-accelerating inflationary rate of unemployment, or also known as natural rate of unemployment. This natural rate of unemployment included what all? क्या क्या included था इस natural rate of unemployment में? What all was included here? Some seasonal, some frictional, some structural, and some voluntary unemployment. ये चार यहां पे included थे, right? But there was another rate of unemployment. There was another rate of unemployment, right? एक और unemployment का rate था, वो कौन सा था? Which was not included in natural rate? Cyclical. Cyclical rate of unemployment also we have read. Cyclical rate of unemployment समझने के लिए we had to understand business cycle. Remember this? Business cycle. Business cycle में भी we were connecting to potential GDP, actual GDP. याद करो, actual GDP sometime going higher than potential GDP. कभी कभी ऐसा होता था, कभी actual GDP going lower than potential GDP, actual GDP going higher than potential GDP. ये भी हमने पढ़ा था. Periods of boom and periods of recession. So we read that the actual GDP, जो actual GDP थी, it could be higher than GDP potential. This could also happen in some cases, right? यही चीज, same चीज, linkage between potential GDP and today's GDP, ये हमने यहां पर भी पढ़ी in terms of recessionary gap, in terms of inflationary gap. अब अगर मैं वो दोनों ग्राफ साथ में बना दूंगा तो आपको समझ आ जाएंगे. You remember this sort of graph was there in the business cycle. अब इस टाइम पे ये यही ग्राफ है. This graph at the bottom, when there is recession in the business cycle, that is recessionary gap. है ना, यही तो है. इस टाइम पे cyclical unemployment आ जाएगी इकोनॉमी में. Then we read the Keynesian solution. Keynesian, जॉन मेनार्ड कीन्स का हमने लॉजिक पढ़ा, एंड जॉन मेनार्ड कीन्स से हमने ये बात कनेक्ट करी, राइट?
सिमिलरली ये जो टाइम है बूम का टाइम है, बूम का टाइम से हमने ये लिंक किया था, फ्रॉम द बूम टाइम वी लिंक दिस which is inflationary gap, and at the time of inflationary gap this is what it looks like, right? So if I draw this graph, this is what business cycle is like. इस टाइम पे it is something like this. Actual GDP is more than potential GDP. Unemployment is less than natural rate of unemployment. Inflation is high and the economy is in an inflationary gap. ये ग्राफ भी हमने यहां से कनेक्ट किया था। फिर हमने देखा था कि इसको करेक्ट करने का एक तरीका है, there is a way to correct this, which is to make flatten this curve as much as possible, which was called counter cyclical fiscal policy, जो इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाया गया था। There is counter cyclical fiscal policy, ये चीज भी हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखी थी कि काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है, इसको इतना ऊपर नीचे होने की जगह फ्लैट करने की कोशिश करते हैं हम, राइट? दिस वी हैड रेड। इसी ग्राफ से मैं ये वाला ग्राफ कनेक्ट कर सकता हूं, ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला ग्राफ है, राइट? फुल एम्प्लॉयमेंट मींस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मींस इकोनॉमी इज एट पोटेंशियल जीडीपी, राइट? तो अब आर यू एबल टू पुट ऑल द कंसेप्ट्स टुगेदर? अब क्या सब कुछ आपस में लिंक हो रहा है? ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस साइकिल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, पोटेंशियल जीडीपी, इन्फ्लेशन, एवरीथिंग इज नाउ इन वन सेटिंग। तो अब अगर मैं यहां पर इफ आई मेक वन दिस ग्राफ, एक ग्राफ में ये बनाता हूं, एक ग्राफ में ये बनाता हूं, and one graph I make like this. All the concepts that I have read till today are on the board. है ना? इन तीन ग्राफ्स में अब दुनिया के जितने कंसेप्ट मैंने अभी तक इकोनॉमी के पढ़े हैं सारे बोर्ड पे हैं, अदर देन द मेंस नुआंसेस आई हैव रेड, राइट? तो यहां तक क्लियर है ना? अब यहां से एक ग्राफ और बनेगा मॉनेटरी पॉलिसी में, देयर विल बी वन मोर ग्राफ इन मॉनेटरी पॉलिसी। मैं यहां पे बता देता हूं क्या मिसिंग है। यहां पर वन ग्राफ ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज मिसिंग, वन ग्राफ ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज मिसिंग, एंड वन ग्राफ विद दिस ग्राफ बीइंग इंपैक्टेड बाय द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज मिसिंग। और जब ये 6 हो जाएंगे तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगा और फिर सिर्फ आप ये 6 फिगर देख के पूरा इकोनॉमी रिवाइज कर लोगे। कुछ ऐसा है ही नहीं, ये इससे लिंक्ड है, ये भी इससे लिंक्ड है, these two are also linked, this is also linked to this। अब ये यहां पर 3 ग्राफ मिसिंग है, अब जब ये तीनों हो जाएंगे तो हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो, बढ़िया लगा, थोड़ा अच्छी रिवीजन हो गई है ना? यू आर एबल टू रिवाइज वट एवर वी हैव रेड सो फार। अब नाउ वी विल स्टडी टुडेज लास्ट टॉपिक विच इज मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है? अब हम मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। ये तो सब पहले ही है, अभी तो मैंने कुछ नया आपको बताया नहीं। अब मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं। लेट्स लुक एट दिस टॉपिक, दिस इज आवर मेन टॉपिक फॉर टुडे, ठीक है? ये अब हमें समझना है, अभी तक तो हम रिवीजन कर रहे थे। इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट, इफ आई एक्चुअली थिंक अबाउट इट, मैंने अभी तक कुछ नया पढ़ाया नहीं आपको, अभी हमने सिर्फ रिवीजन करी है, ठीक है? ले लो 2 मिनट ब्रेक इफ दैट्स व्हाट यू वांट, यू कैन टेक अ 2 मिनट ब्रेक एंड देन वी विल कम टू इन्फ्लेशन की मेजरमेंट। अब हम वो CPI WPI वाली टर्म समझेंगे, ठीक है?
2 मिनट ब्रेक ले लो, फिर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन करते हैं. नरेंद्र इज आस्किंग वेयर इज टुडेज जादू. यार इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि 3 ग्राफ में पूरा सिलेबस खत्म हो गया. 1200 से 1500 पेज के नोट्स बनते हैं इकोनॉमी में, यहाँ एक 3 ग्राफ से खत्म करा दिया आपको. और बताओ क्या चाहिए आपको. Somebody is saying आपने बहुत ज्यादा जादू दिखा दिया, so we have become greedy. So there is increase in aggregate demand of jadoo without increase in aggregate supply of jadoo, leading to inflation in jadoo. यार हमने अभी इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कर्व अभी हमने नहीं पढ़ा है. हम पढ़ेंगे. वी विल डिराइव द फिलिप्स कर्व, डोंट वरी. ठीक है, चलो ठीक है. चलो अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है लॉजिकली समझेंगे. कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही लॉजिकल सा टॉपिक है. इसका बेसिक्स अभी पढ़ेंगे, खत्म इसको कल करेंगे. ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है. इन्फ्लेशन है इंक्रीज इन प्राइस लेवल, जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. तो अब अगर मुझे मेजर करना है कि कितना प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ, किसी भी चीज को मेजर करने का एक ही तरीका है कि पहले मैं आज का लेवल देखूं, व्हाट इज टुडेज लेवल, और मेरे पास कोई पास्ट की रीडिंग हो कि पहले लेवल ये था प्राइस लेवल का और आज प्राइस ये है ना. पहले लेवल ये था और आज लेवल ये है. जब ये हो गया then I can measure the increase in price level, then I can measure inflation. है ना, this is the simple thing I can do. अब एक बात बताओ, is there any other way to measure inflation that you already know? ऐसा कोई तरीका है इन्फ्लेशन मेजर करने का जो आपको ऑलरेडी आता है, that you have already read? That you have already read, is there some type of measure of inflation? Very good. There was one measure of inflation called GDP deflator. ये हमने पढ़ा था. We have read this. GDP deflator बेस ईयर से कंपेयर कर सकते थे, है ना. एक तो ये तरीका था. अब हम दूसरा तरीका देखते हैं. ये तरीका तो है ही, we can measure inflation through GDP deflator also. That way is obviously there. But let us now see how we do this. मुझे देखना है प्राइस लेवल इन द पास्ट कि पहले क्या प्राइस लेवल था एंड प्राइस लेवल टुडे, और उसमें अगर कोई इंक्रीज हुआ होगा प्राइस लेवल इन द पास्ट और प्राइस लेवल टुडे में, तो मुझे मैं कहूंगा देयर इज इन्फ्लेशन. नाउ पहले मुझे क्या करना होगा, आई विल हैव टू, ये जो प्राइस लेवल है इसको मेरे को क्वांटिफाई करना होगा. राइट, आई विल हैव टू क्वांटिफाई द प्राइस लेवल कि एक्चुअल इकोनॉमी में प्राइस लेवल है क्या. राइट, अब
द पॉइंट हियर इज वन वे टू डू दिस इज कि मैं इकोनॉमी में ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी इकोनॉमी में है, मैं सबके प्राइस काउंट करूं. आई काउंट द प्राइस ऑफ एवरी सिंगल वन, है ना, सबका प्राइस काउंट करूं, नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से डिवाइड कर दूं, राइट. तो मुझे एक एवरेज प्राइस लेवल मिल जाएगा कि पेन इज फॉर 10 रुपीज, आईपैड इज फॉर 50,000 रुपीज, लैपटॉप इज फॉर 30,000 रुपीज. ऐसे करके मैं सारी गुड्स एंड सर्विसेज जितनी प्रोड्यूस होती हैं उनका प्राइस लेवल काउंट करूं, क्वांटिटी से डिवाइड करूं, मुझे एवरेज प्राइस लेवल मिल जाएगा. और एवरेज प्राइस लेवल मैं कंपेयर कर सकता हूं. यही काम हम कर रहे थे जीडीपी डिफ्लेटर में. जीडीपी डिफ्लेटर में वी वर लुकिंग एट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एट प्राइस लेवल. ये तो यही कर रहे थे, है ना. नाउ व्हाई इज दिस नॉट अ गुड अप्रोच? ये अच्छी अप्रोच क्यों नहीं है? ये अच्छी अप्रोच इसलिए नहीं है बिकॉज अगर आपको इन्फ्लेशन देखना है, अल्टीमेटली व्हाट इज द जॉब ऑफ एन इकोनॉमिस्ट? इकोनॉमिस्ट का काम है इकोनॉमी को पढ़ना और गवर्नमेंट को कोई रिकमेंडेशन देना, सजेशन देना कि देखो ऐसे कर लो तो इकोनॉमी बेटर चलेगी, राइट. नाउ द प्रॉब्लम इज अगर मैं ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को साथ में काउंट करूं, दिस इज व्हाट वाज जीडीपी डिफ्लेटर. जीडीपी वाज फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. सेम चीज थी, है ना. अगर मैं ये कर रहा हूं, ये अच्छी अप्रोच नहीं है बिकॉज पीपल डोंट हैव द टेंडेंसी टू बाय एवरीथिंग इन द इकोनॉमी एट इक्वल लेवल्स. इस केस में मैंने क्या किया, मैंने कहा सबका प्राइस बराबर. सो पटेटो का भी प्राइस और आईपैड का भी प्राइस, पेन का भी प्राइस, कोट का भी प्राइस, स्पेक्टिकल्स का भी प्राइस, मैंने सारे ले लिए एंड आई क्रिएटेड दिस जीडीपी डिफ्लेटर. दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग. यहां प्रॉब्लम क्या है? People are much more likely to buy potatoes than they are to buy specs. और इससे भी कम likelihood है to buy iPad. iPad आप एक आधी बार खरीद रहे हो, right? And not everyone is buying an iPad. Not everyone is buying spectacles. है ना? Potato almost everyone is buying. तो मेरे को जो इन्फ्लेशन निकालनी है, ऐसे मैं निकाल सकता हूं, बट मुझे निकालनी है फॉर पॉलिसी पर्पस कि मुझे इन्फ्लेशन पता चले, फिर उसके हिसाब से मैं अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाऊं. तो अगर मुझे गवर्नमेंट पॉलिसी के पर्पस से इन्फ्लेशन निकालनी है, इट वुड बी बेटर टू एक्चुअली सी कि लोग क्या खरीदते हैं, ज्यादा क्या खरीदते हैं, कम क्या खरीदते हैं, एंड ऑन दैट बेसिस मेक माई इन्फ्लेशन इंडेक्स rather than making it like this where I take all goods and services. A better way would be to take the goods and services that people actually are consuming, जो वो actually खरीदते हैं, फिर मैं देखूं कि इनके प्राइस लेवल का क्या हुआ, then I make my policy. That would be better. तो अब now I need to quantify the current price level. मुझे क्वांटिफाई करना है प्राइस लेवल को, मेरे को प्राइस लेवल को क्वांटिफाई करना है. एक तरीका था कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज काउंट कर लो, वो हमने जीडीपी डिफ्लेटर में देख लिया. दूसरा तरीका है इसे क्वांटिफाई करने का कि व्हाट इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये टर्म हमें पता है, ऑफ द एवरेज पर्सन. मैं कह सकता हूं कि इंडिया में जो एवरेज पर्सन का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, एवरेज पर्सन कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ एवरेज पर्सन क्या होगा? द मनी दैट दे स्पेंड ऑन अ सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. है ना, मनी दैट दे स्पेंड ऑन अ सेट ऑफ गुड एंड सर्विसेज विल बी देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अगर मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देख रहा हूं, पहले क्या प्रॉब्लम थी, मैं ये नहीं देख पा रहा था कि लोग कितना क्या खरीदते हैं, आईपैड खरीदते हैं ज्यादा या आलू खरीदते हैं या वॉच खरीदते हैं, वो मैं नहीं देख पा रहा था. बट जब मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देख रहा हूं, जब मैं एक्चुअल डेटा देख रहा हूं, जैसे हमने हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे देखा था, जब मैं एक्चुअल डेटा देख रहा हूं, देन आई विल बी एबल टू सी दैट वेयर दे आर स्पेंडिंग देयर मनी. क्योंकि ये एक्चुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो इसमें ये भी पता चल जाएगा कि यार ये एक्चुअली हर मंथ इतना पैसा खर्च करते हैं. The one way to do it is that I say that average person in India used to spend 10,000 rupees per month in 2023. This year, average person in India is spending 12,000 rupees
per month in 2024. 2023 में average person was spending 10,000 rupees per month. This year they are spending 2024 में 12,000 rupees per month. Right? Now, this is also one way to measure inflation. Right? I will say that there is a basket. याद करो poverty line basket भी हमने consider करी थी. We constructed a poverty line basket. The things that are required, the minimum things you must be able to afford to actually be out of or above the poverty line. Similarly, I will construct a basket. Basket of goods and services that an average person consumes. So I can say that an average person in India consumes food, consumes transport, consumes clothing, consumes some electronics, consumes some dairy, some spectacles. Average person spends on this much money. But when I am constructing the basket myself, I am choosing the goods and services. I am not putting all goods and services. I am choosing the goods and services to be put in this basket. And this basket ka price level I will see. When I am choosing this goods and services basket, then I can make it as per the average person. Then I can say कि यार इसमें ज्यादा food items डालो, क्योंकि average लोग food पे ज्यादा खर्च करते हैं. इसमें पेट्रोल ज्यादा डालो, specs कम डालो, iPad मत डालो, because average person in India does not buy an iPad, right? और ये basket मैंने कैसे construct करी? ये देख के कि लोगों का consumption expenditure क्या था और कितना था और किन चीजों पे था. मेरे पास हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा है. मुझे पता है लोग कितना खर्च कर रहे हैं, किन चीजों पे खर्च कर रहे हैं, रूरल एरिया में कितना खर्च कर रहे हैं, अर्बन एरिया में कितना खर्च कर रहे हैं. आई हैव दिस डेटा. मैंने आपको दिखाया था रूरल अर्बन अलग अलग से आता है. सो व्हाट आई डू इज आई क्रिएट अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द एवरेज पर्सन कंज्यूम्स. देन आई विल से दैट दिस बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 2023 यूज्ड टू कॉस्ट 10,000 rupees per month. This basket of goods and services in 2024 now costs 12,000 rupees per month. So I can say in this basket of goods and services that the average person in India consumes these many goods and services. इस goods and services की वैल्यू 10,000 रुपए थी महीना 2023 में. Now it is 12,000 rupees per month. So the general price level, the average price level has increased. इसमें किसी एक गुड का प्राइस इंक्रीज होने पे मैं नहीं बोलूंगा कि इन्फ्लेशन हो गया. जब इस पूरी बास्केट का जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, देन आई विल से इन्फ्लेशन हैज हैपेंड. सिमिलर टू द आइडिया ऑफ पॉवर्टी लाइन बास्केट. वहां बास्केट कंस्ट्रक्ट क्यों कर रहे थे कि कौन अबव पॉवर्टी लाइन, कौन बिलो पॉवर्टी लाइन. यहां क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि एवरेज इंडियन क्या क्या खाता पीता है, किस किस चीज पे महीने में अपना पैसा खर्च करता है. दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आई विल सी. इज दिस क्लियर what I'm trying to do here? Is this clear what I'm trying to do? That the average consumer in India, the average consumer in India consumes this basket and pays this price for this basket. दोबारा बोलता हूं, I'll write this again, this is important. The average consumer pays a certain price for a average basket of goods and services. यही किया मैंने. Average consumer pays this price for a basket of goods and services, and then I will compare this price level. This is average price because it's a huge basket. Actual आपको बता रहा हूं कि यहां पर there are 700 goods and services that I am taking. जो actual measurement methodology है उसमें 700 goods and services I count. कि आप 700 goods and services का एक average price level ले लेते हो कि इनका जो price level है that is my average price level. इसका देखते हैं कितना ऊपर नीचे हो रहा है. This is what I'm doing. Now, when I am trying to measure anything mathematically, what is that process called?
अगर मैं मैथमेटिकली किसी चीज को मेजर करता हूं, क्वांटिफाई करके मेजर करता हूं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये डिस्कस कर चुके हैं हम, वी हैव डिस्कस दिस। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? आप ही बताओगे। इंडेक्सेशन। वेरी गुड। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द टॉपिक ऑफ खत्म हो गया, टाटा गुड बाय, हो गया, ओवर, इतना ही था। यही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, राइट? यही है, हमने पढ़ा था ना, इंडेक्सेशन करते हैं हम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दिस इज सीपीआई। ये सेम चीज मैं होलसेल लेवल पे करूं तो डब्ल्यूपीआई। ठीक है, यही है। तो व्हाट डिड आई डू व्हेन आई हैव टू मेजर इन्फ्लेशन? आई विल क्वांटिफाई द करंट प्राइस लेवल. To quantify the current price level, I will create a basket of goods, right? This basket of goods is what the average Indian consumer consumes, right? How will I find this कि average Indian consumer क्या consume करता है? I have consumption expenditure data. From consumption expenditure data, I will create a basket of goods and services that the average Indian consumes. ठीक है, the basket of goods and services the average Indian consumes, then I will look at इसका price level. This will become my average price level. Then I will see how this changes. कि 2020 में ये basket of goods and services कितने की थी, आज ये basket of goods and services कितने की है, फिर आगे ये basket of goods and services कितने की है. Then I will see this same. अब यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं. पहली बात है, लेट्स टॉक ऑफ नहीं, एवरेज कंज्यूमर क्या होता है, वी विल टॉक अबाउट दैट, वी विल टॉक अबाउट दैट. अब पहले तो लेट्स टॉक ऑफ कि देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स इन इंडिया. द एवरेज कंज्यूमर इन रूरल इंडिया इज नॉट द सेम एज एवरेज कंज्यूमर इन अर्बन एरिया. अर्बन एरिया का जो कंज्यूमर है, दैट इज गोइंग टू कंज्यूम मच मोर ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, that is going to have much more of food expenditure. In rural areas, since it is an agricultural section, उनका food expenditure उतना नहीं है, उनका non food expenditure ज्यादा है. Food तो वो खुद उगा रहे हैं. यहां पर we are going to buy flour, chips, etc. वहां पर they have their own wheat, right? तो एक ये difference आ गया. Basket of goods will be different and prices will also be different, right? मुझे बास्केट ऑफ गुड्स का प्राइस लेवल निकालना है, तो रूरल एरियाज का, अर्बन एरियाज का अलग होगा, राइट? तो पहली तो ये प्रॉब्लम है कि अगर मैंने एक इंडिया लेवल पे बना दिया तो अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग चाहिए. दूसरा, हर मंथ में अलग होगा. देयर विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट मंथ्स. फॉर एग्जांपल, इन द मंथ ऑफ जनवरी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ सर्विस आई विल कंज्यूम. इलेक्ट्रिसिटी के लिए आई विल पे. I will pay for electricity in January also. I will pay for electricity in July also or June also. In January, my electricity bill will be much lesser because AC नहीं चलेगा. In May, my electricity bill is going to be much higher because AC चलेगा. Right? So here also, in different months, there is going to be different average consumption expenditure. पावर्टी लाइन में कहानी अलग थी. पावर्टी लाइन में तो मुझे एक बेस लेवल सेट करना था कि बस इसके ऊपर होना चाहिए आपको, राइट? बट यहां तो मुझे एक एवरेज लेवल ढूंढना है, तो दिस विल बी अ प्रॉब्लम. थर्ड प्रॉब्लम, याद है हमने पढ़ा था फैक्टर प्राइसेस, बेसिक प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस. तो होलसेलर्स भी हैं, हमने पढ़ा है होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर. एक होलसेल लेवल, एक प्रोड्यूसर लेवल है और एक कंज्यूमर लेवल है. कंज्यूमर लेवल पे क्या है, टैक्सेस और सब्सिडीज दोनों. एक होलसेल लेवल है, एक प्रोड्यूसर लेवल है. एट द फार्म गेट प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, देन एट द फार्म गेट बेसिक प्राइस,
देन टू द मार्केट प्राइस। तो अब तीनों लेवल पे प्राइसेस अलग हो गए, तो अब मुझे प्रोड्यूसर और होलसेलर के लेवल पे भी देखना पड़ेगा। ये तीन मेरी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए मैं एक इंडेक्स क्रिएट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट से कि मैं एक इंडेक्स क्रिएट कर देता हूं कॉल्ड सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। में एक नहीं क्रिएट कर सकता, मुझे अलग अलग क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अब इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज दैट देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो अब गवर्नमेंट ने यहां पर क्या सोल्यूशन निकाला? गवर्नमेंट कैलकुलेट्स द सीपीआई फॉर वेरियस ग्रुप्स। सो वी कैलकुलेट सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल, सीपीआई ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स, सीपीआई ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये चार सीपीआई हम काउंट करते हैं कि एन एवरेज अर्बन कंज्यूमर इन इंडिया कंज्यूम्स, दिस इज देयर बास्केट, उनका एक बास्केट बनाया और उस बास्केट का एक प्राइस लेवल तय किया, और इस प्राइस लेवल से हम ऊपर नीचे करते हैं। सिमिलरली एवरेज रूरल कंज्यूमर, उनकी बास्केट ऑफ गुड्स ये है, इस बास्केट का प्राइस लेवल ये है, और फिर हम आगे पीछे कंपेयर करते हैं। सिमिलरली फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स हैं, इन सबकी बास्केट्स भी अलग और प्राइस लेवल भी अलग। सिंस द बास्केट इज डिफरेंट, और बास्केट के मार्केट प्राइस से ही मैं प्राइस लेवल पे पहुंचूंगा, बास्केट भी अलग है और जो उनके आसपास चीजों की कॉस्ट है वो भी अलग है। इस बास्केट में भी फूड है बट प्रोसेस्ड फूड है, इस बास्केट में फूड है बट एक्चुअली फ्रेश फूड है। प्रोसेस फूड की कॉस्ट अलग है, फ्रेश फूड की कॉस्ट अलग है। तो अलग अलग बास्केट, अलग अलग प्राइस लेवल और अलग अलग सीपीआई। तो दिस इज सीपीआई अर्बन, दिस इज सीपीआई रूरल, ठीक है। सिमिलरली देयर इज सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर्स, देयर इज सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स। पहली प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर ली कि बहुत सारे ग्रुप्स थे, तो मैंने अलग अलग सीपीआई बना लिए, इनका अलग अलग इन्फ्लेशन काउंट करेंगे। इन्फ्लेशन एज पर सीपीआई अर्बन, इन्फ्लेशन एज पर सीपीआई रूरल, इन्फ्लेशन एज पर सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर, इन्फ्लेशन एज पर सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। दूसरी चीज, अब याद करो जीडीपी कंपैरिजन। जीडीपी क्या है? अगर मैं इस बास्केट में, द बास्केट दैट आई हैव मेड, if all goods and services are there of the economy, if all goods and services are there, the market price of this basket will be equal to what? If in my basket there are all goods and services, then market price of this basket will be, बताओ जल्दी बताओ, क्या होगा मार्केट प्राइस? इट विल बी द जीडीपी, because GDP is market price of all goods and services produced in an economy, है ना, जीडीपी होगी। अब जीडीपी का कंपैरिजन जब हम करते थे, व्हेन वी वर कंपेयरिंग जीडीपी ग्रोथ, अभी मैंने क्या किया है, मैंने बस इसको ऑल की जगह एवरेज कंजम्पशन के हिसाब से बना दिया है। मैंने एवरेज कंजम्पशन के हिसाब से बना दिया है रादर देन ऑल। प्रोसेस तो सेम ही है, प्रोसेस तो सेम ही है, बस मैंने एवरेज कंजम्पशन के हिसाब से बना दिया, तो सीपीआई बना दिया। यहां पर जब मैं कंपैरिजन कर रहा था तो मैंने कोई बेस ईयर लिया था? एक बेस लेवल तो सेट करना पड़ेगा ना यार, कि इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर क्या हुआ, यही मैंने सेट किया था, राइट। सिमिलरली अगर यहां पर सेम चीज करने के लिए मुझे बेस ईयर लगा था, क्यों लगा था हम याद कर चुके हैं, है ना, कि बेस ईयर था, बेस ईयर से कंपेयर करेंगे कितना ऊपर कितना नीचे, तो यहां पर भी एक बेस ईयर लगाना पड़ेगा। Here also I will need a base year, and since there are 4 different CPIs, every different CPI will have a different base year. I can keep the same also, मैं चाहूं तो सेम भी रख लूं, और I can have a different base year for each of these.
मैं सारे सीपीआई के लिए एक अलग बेस ईयर भी रख सकता हूं, अलग अलग भी रख सकता हूं, और मैं सेम भी रख सकता हूं, दैट्स अप टू मी, है ना, वो मेरी मर्जी। बेस ईयर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बेस ईयर? बेस ईयर किस टाइप का ईयर होता है? नॉर्मल ईयर, अनइवेंटफुल ईयर, जिसमें कुछ बहुत ज्यादा ना हुआ हो, नॉर्मल अनइवेंटफुल ईयर, है ना। तो मुझे एक बेस ईयर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, पहली प्रॉब्लम क्या थी कि डिफरेंट ग्रुप्स, दूसरी थी डिफरेंट इन डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। अब फॉर ईच डिफरेंट ग्रुप आई विल क्रिएट अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। For each different group, I will create a basket of goods and services, and I am measuring this mathematically, so I will link to an index. Indexation क्या होती है अगर आप जानना चाहते हो तो क्लास के बाद पढ़ा सकता हूँ, it's not important, but just to get an idea of how the process actually happens after I finish this topic, if you want I can teach you indexation also. So I link you to an index ताकि मुझे mathematically measure करना हो, है ना। This I have done. Now I have to do actual measurement. So I have to select a base year and I will check variance from this base year. I have not solved the problem of month wise different basket. Month wise different basket की मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, तो अब देखते हैं मैं क्या कर सकता हूं। Let's say my base year is 2020. मैंने सिलेक्ट किया 2020 as base year. 2020 is a very bad year to select as a base year because of COVID, but let's say I have selected 2020 for sake of assumption. मैंने कहा I am counting consumer price index urban. I say that an urban consumer on an average consumes this basket of goods and services. This is the average Indian urban consumer. They are consuming this basket of goods and services, and this basket of goods and services cost rupees 10,000 rupees. This basket of goods and services cost 10,000 rupees in January. ये एवरेज इंडियन अर्बन कंज्यूमर है तो ये सीपीआई अर्बन है, ये एवरेज इंडियन रूरल कंज्यूमर होगा तो ये सीपीआई रूरल हो जाएगा। तो मैं इस बास्केट को हर मंथ के लिए अलग अलग निकाल लूंगा कि जनवरी में दिस एवरेज इंडियन कंज्यूमर कंज्यूम दिस बास्केट जिसकी कॉस्ट 10,000 थी, फेब में ही कंज्यूम उसकी 12,000 थी, मार्च में इट वाज 13,000, ऐसे आई विल मेक इट फॉर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं सबके लिए एक अलग अलग बास्केट बना लूंगा। दैट इन 2020 जनवरी द एवरेज इंडियन कंज्यूमर consumed this basket which cost was 10,000. In 2020 February they consumed this second basket whose cost was 12,000. ये बना लिया, and then I will compare it, I will do this comparison to today. या चलो 2021 मानते हैं. Now I will make the same for next year. मैंने ये बना ली. In 2021 what will I say? In 2021 I will say that okay, I know this is my January basket for average urban consumers in India. देखते हैं इस जनवरी बास्केट का अब प्राइस लेवल क्या है. The price of this January basket has now become, let's say, 11,000 rupees. Okay, so I will compare January basket of 2021 with January basket of 2020. This was 11,000. This is 10,000. So what is the inflation that has happened? 10% inflation has happened year on year.
from last month in January, I had to put 10,000 rupees, or I had to spend 10,000 rupees to get my average Indian consumer basket of January. In 2021, I have to spend 11,000 rupees for the same. So there is 10% inflation year on year. और this is exactly how inflation is measured. अगर आज बोलते हैं that inflation for the month of November in India, अगर ये न्यूज में आप पढ़ते हो कि inflation for the month of November is 6%, it is not 6% relative to month of October, it is 6% relative to November of 2023. समझ रहे हो? It is a year on year comparison. This month versus this month last year, this month versus this month last year, that is year on year comparison. Now I have solved the differential month problem. ये बात समझ आई मैं क्या कर रहा हूं? वही बास्केट मैंने जनवरी फरवरी इन सब की अलग अलग बनाई, अलग अलग प्राइसेस लिए, अलग अलग प्राइसेस, और अब मैंने कंपेयर कर लिया. समझ आ गई बात? This is how inflation is measured. Got it? अब देखो, अब मैं जनवरी के मंथ को देखता हूं. जनवरी 2020 दिस बास्केट वाज 10,000. January 2021 this basket became 11,000. 2022 this became 12,000. 13, and now 14,000. This is again in the month of January only. ठीक है? तो अब मैं क्या बोलूंगा? How will I measure the inflation? यहां से यहां inflation is 10%. So this is 10%, right? Now from here to here, right? This will be counted on this basis. This will be measured as 12,000 minus 11,000 divided by 11,000. So slightly less than 10%. Maybe this is 9% inflation. समझ आ रही है बात? अब इस साल का मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूंगा. The base year was just to set a base level. The base year was just to set a base level. कि अच्छा यार ये बेस लेवल है, अब यहां से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं. कंपैरिजन हमेशा लास्ट ईयर से ही होगा. एंड मेक सेंस? दिस मेक सेंस कि लास्ट ईयर से ही कंपेयर किया जाए. अगर आप थोड़ा सोचो, जीडीपी के बेस ईयर में हमेशा कंपैरिजन पुराने ईयर से होता है. क्यों? क्योंकि हमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाना है. वी हैव टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. दैट इज व्हाई वी वर काउंटिंग फ्रॉम पास्ट ईयर इन जीडीपी. इन इन्फ्लेशन वी एक्चुअली वांट टू सी ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन, कि लास्ट ईयर क्या थी, इस साल क्या है, इस साल क्या है, इस साल क्या है, राइट? सो दिस इज ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन. So this is first it was 10%, now it is 9, now it gets to let's say 8.5, now let's say it gets to 8%. What was the need of base year? Need of base year was to set a base level. ये 10,000 का फिगर ही नहीं आता ना कभी अगर बेस ईयर. अब मैं आपको अगर इंडेक्सेशन पढ़ाऊंगा then you will understand the need of base year. I put this value as 100 when I have to make an index, but ठीक है. The base year is to basically understand. Base year is to understand the level from which I will start measuring. कोई एक जगह तो चाहिए ना from where I will start measuring. I will just explain तो आपको समझ आ जाएगा, right? अब this is how I have constructed my inflation. तो अब अगर मैं CPI inflation, let's say this is comparison of CPI urban. Let's say this is CPI urban, right? If this is CPI urban,
तो सीपीआई अर्बन में इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ जनवरी in 2021 was 10%. In 2022 it was 9%. In 23 it was 8.5, and in 24 it was 8%. Now, are prices rising? Obviously I will have to check from last year only ना यार. अगर मैं 2020 से ही चेक करता रहूंगा तो इन्फ्लेशन हमेशा ही बढ़ती रहेगी ना. Prices are constantly rising, but the rate of inflation is falling. ये सामने जो एग्जांपल है, prices are rising. I can say that price rise is happening, but rate of inflation is falling. Rate of inflation is falling. पहले 10% था, फिर 9%, फिर 8.5, फिर 8%. कंपेयर मैं लास्ट ईयर से ही करूंगा, है ना. नाउ दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिसइंफ्लेशन. इस टाइप के पैटर्न को कहा जाता है, दिस टाइप के पैटर्न को कहा जाता है डिसइंफ्लेशन. डिसइंफ्लेशन. बेस ईयर वाली जो कंट्रोवर्सी है मैं अभी समझाता हूं आपको, जस्ट वेट. बेस ईयर वाली को अभी देखते हैं, जस्ट गिव मी सम टाइम. पहले इसको समझ लो. वी आर कंपेयरिंग ईयर ऑन ईयर, है ना. हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर रहे हैं, राइट. सिंस वी आर कंपेयरिंग ईयर ऑन ईयर, आई एम कंपेयरिंग लाइक दिस. पहले 10%, फिर 9%, फिर 8.5, फिर 8%, राइट. ये बात समझ आई. दिस इज डिसइंफ्लेशन, मतलब फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इट इज नॉट डिफ्लेशन. डिफ्लेशन क्या है? फॉल इन प्राइस लेवल. अगर ये 10,000 से यहां 9,000 हो जाता, then it would be deflation. There is a fall in price level. Deflation is fall in price level. Disinflation is fall in the rate of inflation. ये term important है to learn like this, because आपने देखा था इन terms पे question आ रखे थे. Disinflation, stagflation, recession, deflation, इस पे there were questions. So we have to understand the meaning of these terms. So disinflation is fall in the rate of inflation. Inflation is still happening, बस रेट ऑफ इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो रहा है. पहले 10% था, फिर 9% था, फिर 8.5%, फिर 8%. ये क्लियर हुआ. अभी बेस ईयर की बात करते हैं. बेस ईयर की भी बात करते हैं. ये बात क्लियर हुई. Chitranshu is asking, sir, in disinflation can price also go down? If price goes down, what will it be called? अगर ये 10,000 से नीचे चला जाता तो इसे मैं डिसइंफ्लेशन कहता या डिफ्लेशन कहता? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग ना. इफ प्राइस गोज डाउन, इट इज डिफ्लेशन, है ना. प्राइस नीचे हो गया तो डिफ्लेशन. फॉल इन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, फॉल इन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज डिसइंफ्लेशन, है ना. अब एक बात करते हैं बेस ईयर की. अगर मुझे ईयर ऑन ईयर ही कंपेयर करना था, इफ आई हैड टू कंपेयर ईयर ऑन ईयर, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ बेस ईयर? बेस ईयर जरूरी क्यों था, राइट? व्हाई वाज बेस ईयर नेसेसरी? देखो, आई वांटेड टू सी व्हाट द एवरेज इंडियन अर्बन कंज्यूमर consumes ये तो देखना पड़ेगा ना. एवरेज इंडियन अर्बन कंज्यूमर क्या कंज्यूम करता है. आई विल हैव टू सी व्हाट द एवरेज इंडियन. टू सी दिस, आई विल हैव टू सिलेक्ट दिस एट सम टाइम. एट सम टाइम आई विल हैव टू मेजर दिस. आई कैन नॉट मेजर दिस विली निली. जब मेरा मन करा देख लिया, किसी टाइम पे मेजर करना पड़ेगा.
So I will see what the average Indian urban consumer consumed in the year 2020. 2020 में जो भी एवरेज इंडियन कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, दैट विल बी माय बास्केट. Now this basket will not change. This basket is not going to change now. ये नहीं चेंज होगा अब. इसका बस चेंज इन प्राइस लेवल में देखता रहूंगा. So the base year here is to set this basket. I have to set a basket also ना. किसी ईयर के बेसिस पे करना पड़ेगा. For example, in 2019, let's say it was a particularly warm year, very hot year. So the amount of electricity consumed that year would be higher. If it is a particularly cold year, the amount of, let's say, quilts consumed or jackets consumed that year would be particularly higher. That is why I want to find a normal year to first make my basket. Once I make my basket, then I will be able to check the price of that basket year on year. But at some point in time, that basket will have to be constructed. That point in time when this basket is constructed is my base year. समझ आई बात? समझ आई बात? अब now if I have a very very old base year, मान लो मेरा base year is 1975. Is it a good thing? It's not a good thing, because जो 1975 की बास्केट है वो तो आज रेलेवेंट ही नहीं है ना. मेरा बेस ईयर कैसा होना चाहिए? I should have a base year. The base year that I have should be a recent base year, and it should also be a normal year. एक recent और एक normal base year होता तब समझ आता है ना. उससे मैं बास्केट कंस्ट्रक्ट करूंगा और फिर उस बास्केट का मैं प्राइस लेवल देखता रहूंगा. So it should be recent also, it should be normal also. Only then that will be a good base year for me. So of course I have to keep on updating the base year, right? एक टाइम के बाद मुझे चेंज करना पड़ेगा. I cannot keep the same base year for hundreds of years. I cannot answer every question here. If you have any, I think it's fairly clear. I think आप बता सकते हो. I cannot make it more clear than this. अगर अभी भी question है, तो you can send it in the doubt form. I think I have made it fairly clear that I will have to construct a basket, and then I'll have to check. है ना. अब इसके ऊपर like this is fairly simple. ये सब हम कर चुके हैं पहले. We have done all of this before. Nothing new is actually being studied here. है ना. ठीक है. अब एक और प्रॉब्लम क्या थी? That wholesale prices were different. ठीक है. Wholesale prices were different. तो अब wholesale level पे समझते हैं. Similarly, I will make a, जैसे मैंने consumer price index बनाया है, I will make a wholesale price index. This also I will have to make, right? है ना? Similar I will have to make. Now wholesale price index में क्या क्या फर्क आएगा देखते हैं. पहले तो there will be difference in tax and subsidy. टैक्स सब्सिडी लेवल्स की वजह से प्राइस लेवल्स अलग होंगे. इवन इफ द बास्केट इज द सेम, प्राइस लेवल्स विल बी डिफरेंट, राइट? This pen at the wholesale level is not going to cost 10 rupees. If it costs me 10 rupees, at the wholesale level its price is going to be different, right? ये तो समझ आता है. टैक्स सब्सिडी भी डिफरेंट होगा वहां पे, ये भी समझ आता है. Is there any other difference? ये अगर आपने बता, देखो this is not producer price index. ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नहीं है. ध्यान से देखना. दिस इज नॉट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. ध्यान से देखते हैं. लेट्स से
प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट, एक सेट ऑफ फार्मर्स है वो प्रोड्यूस व्हीट, बहुत सारे फार्मर्स ने मिलकर व्हीट प्रोड्यूस किया, ये व्हीट खरीदा होलसेलर ने, इसने आगे बेचा रिटेलर को, एक्चुअली देयर इज डिस्ट्रीब्यूटर, इट्स नॉट रिटेलर, इसने आगे बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा रिटेलर को, एंड रिटेलर ने बेचा कंज्यूमर को। तो अब हम इस लेवल पे प्राइस लेवल्स देख रहे हैं कि यहां पर प्राइस लेवल्स क्या हैं। हम यहां देख रहे हैं प्राइस लेवल्स क्या हैं, ठीक है, होलसेल लेवल पे प्राइस लेवल्स क्या हैं। तो क्या क्या डिफरेंट होगा, व्हाट ऑल विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस लेवल। एक तो प्राइसेस विल बी डिफरेंट, some prices will be different, there will be some tax subsidy effect that will be different, है ना, दो चीजें तो ये हो गई। there might be a different basket also, क्योंकि अगर मैं एवरेज होलसेलर को देखूं, अगर मैं एवरेज होलसेलर को देखूं तो एवरेज होलसेलर इन इंडिया buys wheat, बट एवरेज अर्बन कंज्यूमर बायज फ्लावर। हम तो आटा खरीदते हैं ना, और वो तो व्हीट खरीदते हैं। पिस्ता आटा कहीं यहां पे है, दिस इज वेयर द व्हीट गेट्स चाफ्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फ्लावर समवेयर हियर, है ना। सो द प्राइसेस आर डिफरेंट हियर, जिस प्राइस पे हमें व्हीट मिलेगा उतने पे तो नहीं मिलेगा इनको, नहीं तो ये प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। टैक्स और सब्सिडी का इफेक्ट भी होगा यहां पे, मार्केट प्राइस, बेसिक प्राइस, देयर विल बी सम डिफरेंस। देन अ बास्केट विल आल्सो बी डिफरेंट, जो लोग एक एवरेज होलसेलर जो खरीदता है और एक एवरेज कंज्यूमर जो खरीदता है, दैट विल आल्सो बी डिफरेंट, है ना। बास्केट विल बी डिफरेंट मींस गुड्स विल बी डिफरेंट, क्वांटिटी विल बी डिफरेंट। अब देयर इज वन मोर डिफरेंस, if this you can think on your own self, तो मैं आपसे काफी इंप्रेस हो जाऊंगा, क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा था मैं नहीं सोच पाया था। देयर इज वन मोर डिफरेंस, इन द बास्केट। आनंद आपको आता है, आपने अभी नहीं सोचा है ये। चलो, कई लोगों को याद है तो आई विल जस्ट से इट, मैं बता देता हूं, क्योंकि आई थिंक दीज आर, देखो आपको शायद ये रियलाइज हुआ होगा, ये टॉपिक पढ़ाना ना बहुत आसान है। आई डोंट नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट, इट्स वेरी इजी टू टीच दिस टॉपिक। इन्फ्लेशन वगैरह कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं, राइट, बिकॉज एक तो इट्स वेरी कनेक्टेड टू आवर रियल लाइफ्स, वी एक्चुअली सी इट। तो ये फिर भी लोग पढ़ लेते हैं, जो मुश्किल काम था ना वो हम कर चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह दैट वाज अ डिफिकल्ट थिंग, वो हम कर चुके हैं। ये काम आसान है, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। होलसेलर कर क्या रहा है, व्हाट इज द होलसेलर डूइंग, ही कलेक्ट्स गुड्स, he collects goods and then further distributes them to retailer. Can he do this for services? Can you collect services in one place and then distribute them? Can you collect services in one place and distribute them? गुड्स को तो आप कलेक्ट करके सर्विस स्टोर कर सकते हो, क्या आप सर्विसेज को स्टोर कर सकते हो? It is not possible to store services. Services are not sold at the wholesale level. For example, you can't say to, यहां पर क्या कह रहा है ये,
यहां ये कह रहा है that you give me, I will go to 50 farmers and I will take their wheat. Now to the next person who wants to buy wheat, I am the farmer. ध्यान से सुनना, मैंने 50 फार्मर्स से उन सब का प्रोड्यूस खरीद लिया. Now to the next person who comes and wants to buy wheat, technically I am the farmer because I have all the wheat. मेरे पास सारा wheat है तो मैं अब फार्मर हूं. जैसे वो फार्मर से खरीदते हैं, मेरे से खरीद लो. यही कह रहा है वो गुड्स में. Can he say to 50 doctors, I want to buy your healthcare service, and now to the next person who comes, I am the doctor? No. That is why services cannot be sold at a wholesale level. You can have bulk discounts. That is a different thing. Bulk discounts अलग होते हैं. That is a different thing. कि आपको एक सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें लोगों को लेके आ रहे हो, आपको बल्क में ले रहे हो तो डिस्काउंट मिल गया. दैट इज डिफरेंट. बट हियर देयर इज ट्रांसफर. सर्विसेज कैन नॉट बी इफेक्टिवली ट्रांसफर्ड. देयरफॉर एट द होलसेल लेवल सर्विसेज आर नॉट काउंटेड. देयरफॉर इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स, other than all the other changes, the effects of tax and subsidy, different prices, different basket of goods, there is also one major difference, that there is no consideration of services. Services are not counted. Services are not counted in wholesale price index. तो अब मुझे क्या समझ आया है ना? मुझे क्या समझ आया? मुझे ये समझ आया that inflation is the general increase in the price level in the economy. Price level can be due to measuring unit and quantity. अभी मैं इसको कंसिडर कर रहा था. On this basis, I can say that there are two first types of inflation: demand pull inflation and cost push inflation. Then I read two other terms: deflation, that means fall in price level; disinflation, meaning fall in the rate of inflation, but still prices were rising. Once I have understood this, I wanted to now see the relationship between inflation, unemployment, and growth. This I saw through various graphs. When I talk of inflation, it is actually price level determined. Price level changes because of aggregate demand and aggregate supply. So whatever factors are affecting this aggregate demand and aggregate supply can have an impact on the price level, can have an impact on the inflation. The other factors, of course, are related to the measuring unit, which will be money supply, but we will see that later. When I have to measure inflation, when I want to measure inflation, one way is to measure it through a GDP deflator, but it will look at all goods and services. I want to see specific goods and services for various different type of people. The problem here is that there are many different types of consumers. It is different in different months, and it is different at the wholesale level. Therefore, for accounting for the various types of consumers, I calculate a consumer price index urban, consumer price index rural, of industrial laborers and agricultural workers. I report it year on year, month basis पे. I will report it January 2023 versus January 2024. To construct a basket, to make it specific, I will construct a basket. To construct a basket, I also require a base year. And I will also construct a separate wholesale price index that will account for differences such as subsidy and tax. And it will not include services. Even the basket here will be different. This is what we have read today. अब ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार कॉमनली पूछा जाता है, स्पेशली जब मैं डेली शेड्यूल या किसी चीज की बात करता हूं.
तो इस चीज पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हेन आई एम अटेंडिंग अ क्लास डज इट काउंट इन माय स्टडी टाइम और नॉट, एंड दिस इज अ फेयर क्वेश्चन। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप 8 घंटे पढ़ो दिन में, डज दिस काउंट इन योर स्टडी टाइम और नॉट? इसका एक सिंपल आंसर है, ये मैंने अभी दिस एंटायर थिंग आई हैव ड्रॉन इन 5 मिनट्स। इफ यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस इन 5 मिनट्स, अगर आप भी 5 मिनट में ड्राइव कर लोगे तो आप इस क्लास का टाइम अपने स्टडी आवर्स में काउंट कर लेना। इफ यू कैन नॉट ड्रॉ दिस इन 5 मिनट्स, देन दिस इज नॉट स्टडी, देन दिस इज मियरली इंजॉयमेंट। आई नो थोड़ा हार्श है ये, ठीक है, बट फैक्ट यही है, दिस इज मियरली इंजॉयमेंट इफ यू कैन नॉट डू दिस इन 5 मिनट्स, ठीक है। एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज कि आप अभी आधे घंटे का ब्रेक लो और अभी पढ़ लो। इफ यू स्टडी इट राइट नाउ यू विल बी एबल टू रिकॉल, बिकॉज देखो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारा लॉजिकल कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आपको सब कुछ एकदम याद रह जाए, इम्प्रिंटेड रह जाए मेमोरी में, है ना। तभी ये होगा अगर आप अभी पढ़ोगे, अभी आपके माइंड में फ्रेश है। एंड ऑफ कोर्स माय एक्सप्लेनेशन काउंट्स फॉर समथिंग। अगर सिर्फ नोट्स पढ़ के करना होता तो फिर आप ये लेक्चर देख क्यों रहे हो, राइट? सो यू हैव टू ड्रॉ दिस योरसेल्फ, यू हैव टू ड्रॉ दिस योरसेल्फ। अगर आप खुद ड्रॉ कर लोगे तो ही बात बनेगी, और आपको ये ड्रॉ करने के लिए हैंड रिटन नोट्स की जरूरत नहीं है। डिड आई लुक एट हैंड रिटन नोट्स टू ड्रॉ दिस? अगर आपको थोड़े स्पेसिफिक्स भूल जाएं, जैसे यू फॉरगेट दिस कि इस बास्केट में क्या था, या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का आप एक आधा कुछ भूल जाओ, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, वो हो जाएगा नोट से रिवाइज। बट दिस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इफ यू हैव, और ये आपको आइडली किताब बंद करके करनी चाहिए। अगर आप लेट से यहां पर अटक जाते हो, कि यार हमने क्या रिलेशनशिप पढ़ा था, देन यू नो ना कि नोट्स में दिस इज व्हाट आई हैव टू रीड। या अगर आप यहां अटक जाते हो कि कौन से 4 टाइप्स थे, अगर आप यहां अटक जाते हो तब आपको पता है कि मुझे नोट्स यहां से पढ़ने हैं, आपको नोट्स यूज करने हैं बिल्कुल, बट ये काम आपको बिना नोट्स के करना है। यहीं से तो समझ आएगा कि आपको क्या याद नहीं है आज की क्लास में, और सबसे पहले वही नोट खोलना। somebody is writing you are veteran we are beginner। एक तो मैं कोई वेटरन हूं नहीं, ठीक है, आई एम जस्ट 27 years old। सेकेंडली यू विल ऑलवेज बी कंपीटिंग विद वेटरन्स। आपको मैंने आज इंटरव्यू का डेटा दिखाया, डराना नहीं चाहता आपको, इसलिए मैंने ये बात नहीं बताई। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग विच इज अ फैक्ट, ट्रू फैक्ट, एंड यू कैन वेरीफाई दिस। इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं 2845 लोग, ठीक है, 2845 पीपल आर गिविंग द इंटरव्यू। इसमें से 750 पीपल गिव द इंटरव्यू लास्ट ईयर ऑल्सो। इसमें से 750 लोगों ने 2023 में भी इंटरव्यू दिया था। सो द स्पेस फॉर न्यू पीपल टू एंटर दिस लिस्ट वाज ओनली 2000। ये प्रॉब्लम है इस एग्जाम की, बिकॉज देयर आर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, सो पीपल विल कीप ऑन अपियरिंग। इन लोगों ने 2023 में भी इंटरव्यू दिया और ये 2024 में भी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सिर्फ 2000 नए लोग ही एंटर कर पाए ना यहां पर, राइट? ओनली 2000 न्यू पीपल कुड एंटर। देयरफॉर यू विल ऑलवेज हैव टू compete विद वेटरन्स। और अगर आप इस लिस्ट में हो भी, फाइनल सीटें तो इतनी ही हैं। अब दिस न्यू ग्रुप एंड दिस ओल्ड ग्रुप इज कंपीटिंग फॉर दिस सीट। अब क्या, नाउ व्हाट? आप वेटरन से कर लो कंपीट, अब वो तो लास्ट ईयर इंटरव्यू देके आए हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, आपको हमेशा कंपीट करना पड़ेगा। जब तक इतने अटेम्प्ट्स हैं आपको कंपीट करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। दैट बीइंग सेड, आई विल अपलोड द नोट्स राइट नाउ एज सून एज आई गेट बैक। क्लास से निकलते ही मैं अपलोड कर दूंगा। इट टेक्स सम टाइम टू अपलोड, विद इन हाफ एन आवर बिफोर 8 PM यू विल सी देम।
ठीक है, बिफोर 8 PM यू विल सी देम, ठीक है। चलो, we will end our class here today, right? I am just not doing active recall till the 19th because DAF में बहुत टाइम लग रहा है, right? I have to talk to at least, आपने देखा ये 600 लोग जो हैं, 614 लोग, all of them want to talk to me once and they have earned the right, honestly, कि वो DAF भरने से पहले मेरे से बात करें। तो I have to talk to these 614 people, इसीलिए अभी आई एम नॉट टेकिंग दिस एक्टिव रिकॉल। 19th के बाद अच्छे से एक्टिव रिकॉल करेंगे। टुमारो वी डू हैव अ क्लास सेम टाइम 4:30, कल भी क्लास है 4:30 मिलते हैं, ठीक है। चलो चलो अच्छा, ऑल राइट सर। वन थिंग, इंडेक्सेशन रह गया था। अब अगर आपको नहीं पढ़ना है इंडेक्सेशन तो आप छोड़ सकते हैं, यू कैन लीव इट, ठीक है। यू कैन लीव इट इफ यू डोंट वांट टू स्टडी इट, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं, जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी आई विल टेल यू व्हाट इंडेक्सेशन इज। दिस इज जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, इट्स एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी, यूपीएससी में नेसेसरी नहीं है, बट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। नाउ देखो, आई वॉज कंस्ट्रक्टिंग बास्केट्स लाइक दिस, है ना। आई वॉज कंस्ट्रक्टिंग बास्केट्स लाइक दिस, जनवरी की बास्केट 10,000 रुपए की इन 2020, राइट। यही ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहा था। टू डू इंडेक्सेशन, January's basket in 2020's cost was rupees 10,000. To do indexation is done so that I can compare mathematical values easily. So I will say January basket of CPI Urban in 2020, made in 2020, cost rupees 10,000. But in my index, I will write it as 100. February basket of average Indian urban consumer in 2020 cost rupees 12,000, but here in my index I will also write February as 100. So for February, 12,000 is equated to 100. For January, 10,000 is equated to 100. For March, let's say 13,000 is equated to 100. मैंने सबको 100 के लेवल पे लिख दिया in my index, just so that my mathematical calculation is easier. So my index will look like this. My index will say January, February, March, April, May, basket of 2020 for CPI Urban. Actual cost is 10,000. Index value is 100. Actual cost is 11,000. Index value is 100. Actual cost is 12,000. Index value is 100. Now I will calculate same values for 2021. When I calculate for 2021, this actual cost has become 11,000. If 10,000 was 100, 11,000 will be what value? 110. So now a new index says in 2021 says it is now 110. Let's say this value stays at 11,000. February में कुछ change नहीं होता. 11,000 was 100. Here also I will write 100. Let's say this value 12,000 becomes for some reason 24,000. Actual value becomes double. Index value, if 100 was earlier representing 12,000, now 100 is going to represent. Now the value is going to come as 200. Now this is what my CPI will look like. तो ऐसे actual compare में इन्हीं values को कर रहा हूं, but to make it easy to write, I will write it like this, and then my comparison becomes easier. So then my index will look something like 2020 Jan, it was 100. 2021 Jan,
it was 110. 2022 Jan, it was 120. So I will measure like this. Okay, it is just for simplification purpose that I will make this value equivalent to 100 so that I can show it like this. Okay, now let us say that in January my index is 100, January 2021 or 2020. Now let me look at case 1. Case 1, 2021 जनवरी, वो 2020 है, 2021 जनवरी में वैल्यू becomes 102, 2022 में it becomes 120. Case 2, यहाँ पर it becomes 110 then 120. So in both these cases the final value is 120 only, right? Final value is 120 only. But if I am measuring from here, then this will be almost 20% inflation, and this will be 2%, this will be 10%, right? That is why I cannot measure from the base year. नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना. If I measure from the base year, let's say मैं base year से measure करता हूं दोनों cases में, then in both cases inflation is 20%. But is it accurate? No. यहां पर पहले 2% थी, फिर 18% हुई है, और यहां पर पहले 10% थी, फिर 10% रही है अप्रोक्सीमेटली. अगर मैं बेस ईयर से ही कंपेयर करने लगूं तो यहां भी 20, यहां भी 20 है ना. दिस इज वाई वी सिलेक्ट अ बेस ईयर only to construct a basket. Comparison is done from past year. Indexation means putting values like this so that it is easier to compare. अभी ये बहुत सिंपल लग रहा है 10,000 वगैरह, तो मेरे लिए आसान है. It seems like indexation का कोई पॉइंट नहीं है. But the CPI index consists of about 700 goods and services. When there are so many goods and services, it is better to equate values like this so that comparison becomes easier. Otherwise, the calculation will become much more complex. That is all that indexation is. यही है indexation. ठीक है, नहीं भी समझ आया तो भी चलेगा. It's absolutely not important. बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. If you didn't understand, it's completely okay. ठीक है. चलो, ओके, हैव अ गुड इवनिंग. कल मिलते हैं 4:30 बजे.